हेलो वेलकम बैक टू ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस। और यस, थोड़ा सा लेट हो गया आज बिकॉज हाँ, हम प्लान कर रहे थे 1 बजे करने का, लेकिन यार इट हैपेंस बट नॉट जस्ट दैट, इट इज क्लोजर टू डेडलाइन, सो सब लोग रेडी हो जाइए। एंड यस, आई नो दैट बेसिकली मैंने पब्लिश नहीं किया था इन एडवांस, बट फॉर पीपल हु वॉच्ड यस्टरडे, भाई हमने किया था ट्रांसफर राउंड अप ऑफ द एंटायर विंडो। तो वहां पर हमने बोला था, और एवरीवन हु मिस्ड आउट डू चेक इट आउट बिकॉज काफी सारे ट्रांसफर्स हुए थे especially on deadline day. But again, thanks a lot for people who are joined. और यहाँ पर yes, definitely preview तो करेंगे ही, beat across teams, across leagues. लेकिन इम्पोर्टेंटली एफपीएल का डेडलाइन होने वाला है लिटरली 1.5 घंटों में, तो होपफुली वी कैन हेल्प ईच अदर। वही मैं बोलूंगा, वैसे ही नहीं बोलूंगा मैं एक्सपर्ट लाइक दैट, विल सर्टेनली हेल्प ईच अदर, वही मैं बोलने वाला हूँ। डेट्स का गेमिंग, बिग अप आपको, एब्सोल्युटली थैंक्स फॉर जॉइनिंग। मुदित एज वेल, बिग अप ब्रो, कैसे हो? Can't wait for Man United with Arsenal. Yes, of course, that's a big game, and in fact, big games. Milan Derby hai, Man United Arsenal hai. Of course, Chelsea West Ham also is not cakewalk. Aaj, by the way, yes, shout out hai. We'll hopefully be as always live for the pre-match for the Chelsea game as well. Angibia, good morning. Looking fresh. What's the reason? By weekend, weekend mein always looking fresh. Weekends are always the best. Don't you agree? Come on. Especially football being back as always, right? But it's been a busy week, I must say. ऑल्सो फाइनली आप ट्विटर स्क्रॉल करे बिना सो सकते हैं यार। ट्रांसफर न्यूज टोटली तो खत्म नहीं होते, लेकिन हाँ, आई आई हियर यू एब्सोल्युटली जयेश भाई। बाय द वे, शाउट आउट है भाई फुटबॉल कमेंट को भी, नाइस चैनल, डू चेक इट आउट। मिलान डावी एंड बार्सिलोना सेविया भी है, यस एब्सोल्युटली है संजीव, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं एब्सोल्युटली, गेम ऑन बाय सोदी हियर। चलो तो we'll go game by game, and game by game we'll come to the Milan derby absolutely, और Barcelona Sevilla and बाकी लीग्स के बारे में हम बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड। लेकिन द रीजन आई एम नॉट स्टार्टिंग विद दैट इज बिकॉज यार देयर इज अ डेडलाइन। आई नो दैट आप लोग साथ साथ में शायद सब्स्टिट्यूशंस करो फॉर पीपल आउट देयर, फॉर एफपीएल मैनेजर्स हु नॉट डन, दैट इज व्हाई वी विल स्टार्ट विद द मे बी प्रीमियर लीग, एंड देन साइड बाय साइड हम डिस्कस करेंगे एफपीएल, एंड देन मूव ऑन टू मिलान एंड अदर थिंग्स एब्सोल्युटली। हाँ भाई गुरशन, मैं अगेन maybe I was just preparing for this, that's why I didn't kind of get time, but anyway I'll get there. Last FPL game week provided me 71 points, gave a boost to 10 positions upwards in your league. अरे भाई साहब, मैं नीचे हो गया। मैं I'm players like me in FPL don't do well because हमने transfers नहीं की थे enough, but anyway I think हमने एक एक्स्ट्रा ट्रांसफर रखा था because of transfer market being finally closed. So let's see, hopefully we can get someone. Wow. That's close. That's great. Yeah, that's great, Sej. Brilliant to hear. तो शुरू कहाँ से करें यार? मतलब I know that you would say that Manchester United and Arsenal is probably the biggest, लेकिन लिवरपूल डार्बी आज है, मतलब मर्सीसाइड डार्बी आज है भाई। मर्सीसाइड डार्बी यार क्या बोलोगे इन टर्म्स ऑफ बेसिकली प्रेडिक्शंस? प्रेडिक्शंस में तो क्लियरली बताओ, मर्सीसाइड डार्बी स्पेशली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज, अच्छा चलो, इट्स एट एवर्टन, लेकिन एवर्टन में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग लिवरपूल हैव हैड द अपर हैंड। हाँ, एवर्टन एट बेस्ट ड्रॉज लिए है, और लास्ट टाइम पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं, लास्ट टाइम था क्या? आई थिंक देयर वाज अ टाइम व्हेन फ्रैंक लैम्पार्ड प्लेड अ वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन विद लिवरपूल, और वहां पर बहुत एक बैटल हो गया था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बैटल अगेन, ऑलवेज मर्सीसाइड डर्बी बैटल तो होता है। एंड यस, इनफेमसली सब लोग को याद होगा, आई थिंक ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑफ कोर्स देयर वाज अ पिकफोर्ड वर्सेस वैन डाइक मोमेंट। फिर बेसिकली लास्ट टाइम भी लाइक आई सेड देयर वाज अ लॉट ऑफ एक फिजिकल एक्टिविटी था इन टर्म्स ऑफ द पिच, बट एवर्टन भाई दे नीड टू स्कोर सम गोल्स, और गॉर्डन पर ही डिपेंड कर रहे हैं वो लोग, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। और हाँ, हम एब्सोल्युटली यहाँ पे आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ इंजरी न्यूज एंड व्हाट नॉट, हम कवर करने वाले हैं एज मच एज पॉसिबल, तो आपको पता लगे किसको नहीं लेना है इन टर्म्स ऑफ फैंटेसी एज वेल। देखिए यार, इन टर्म्स ऑफ एवर्टन, फर्स्टली आई डाउट कि यार आप लोग कोई प्लेयर्स को लोगे, ठीक है, गोइंग बाय द फॉर्म। हाँ, मे बी गॉर्डन, considering Gordon is just 5.5 और वो 19 पॉइंट स्कोर कर ली है, that is very good in my opinion. But the fact that they have injuries as well, Holgate is a long term injury, वो याद रखिए। यरीमीना वो भी अभी तक फिट नहीं है, तो आई थिंक गॉडफ्रे वहां पर भी इश्यू है, तो आई थिंक दे हैव एन इश्यू व्हेन इट कम्स टू बेसिकली डिफेंस एवर्टन का। एंड डोकोरे इन मिडफील्ड, ही इज आल्सो आउट एज वेल एज टाउनसेंड, और कैल्वर्ट लिविन तो हमें पता ही है। तो ये 5-6 इंजरीज है एवर्टन के पास, तो ये याद रखना आप लोग, एफपीएल मैनेजर स्पेशली। नहीं यार, वॉच अलोंग तो आई डाउट, लेकिन लेट मी सी, आई ट्राई एंड डू द मिलान वन, मिलान डार्बी अगर आता है तो आई चेक इट इफ इज कमिंग ऑन टीवी, तो मैं करने वाला हूँ, वो है रात को। लेकिन हाँ, I'll do the pre-match for sure यार, pre-match is something that I planned. I'll go for Everton 3-1 win,
just being that differential. Okay, nice. Jagiel का long range last minute goal अंकित को absolutely, it's been a while though, लेकिन हाँ definitely मैं याद रखता हूँ उसको. 1-4 to Liverpool, full thrashing. Okay, let's see. मतलब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर. I probably agree with Game On by Sodi. Yes, Liverpool last match में मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब I certainly feel that luck favored the Brave वाला चीज हुआ. I will say that they were lucky, but at the same time they were brave enough to go till the last moment. And will Klopp actually make changes and actually be brave enough to start Fabio Carvalho? क्योंकि बहुत सारे लिवरपूल फैंस बोल रहे हैं कि भाई maybe there is a chance that Fabio Carvalho may get a start, considering जो हावी एलियट ने भी दिखाया है, maybe give him a chance. लेकिन the big news is Darwin Núñez. Darwin Núñez, people, yes, for all fantasy managers out there, भाई याद रखिए, डार्विन नूनेज as much as वो थोड़ा रखते, थोड़ा गर्म मिजाज के, वो फिर भी आई थिंक देयर इज अ हाई चांस that Darwin Núñez, will score a goal, in my opinion. ठीक है. And yes, technically वही मैं बोलने वाला था. He is back. He is back at 8.9 million. Is Darwin Núñez worth it? I would say he's worth it. And yes, मैंने साला को actually लिया था in as a captain. I've kept him as captain one of my teams. तो क्या आप साला को कंटिन्यू करोगे इस कैप्टन? यहाँ पर हम दिखाएंगे, मतलब लेट्स सी व्हाट इज बेसिकली द फिक्सचर्स. और हाँ, मैं आ रहा हूँ कमेंट्स में, और लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी द फिक्सचर्स ऑफ लिवरपूल. ठीक है, तो आप देखिए, दे आर प्लेइंग चेल्सी ऑन 18 सितंबर, देन दे आर प्लेइंग आर्सेनल ऑन 9 अक्टूबर, एंड दे आर प्लेइंग मैन सिटी ऑन 16 अक्टूबर. तो जनरली मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ आई नो लिवरपूल है, मैन सिटी है, दीज टू टीम्स आप इतना नहीं देखोगे विद रिस्पेक्ट टू फिक्सचर्स. लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यहाँ पर इज दैट मे बी, जस्ट मे बी, when it comes to defenders of Liverpool, you be a little bit careful. Go for defenders like a Trent or a Virgil van Dijk. लेकिन बाकी I don't think they will score goals और वो concede कर सकते हैं. That is what I'm saying. For Liverpool, be careful on the fixtures. लेकिन Salah as captain for this game, because it's एक Merseyside derby है, I would say मैं तो किया फेथ रखूंगा यार साला पे. आप लोग बोलिए, what do you think about that? 3-1 for Liverpool. Okay, 1-1. Liverpool shall sail through. Okay, this week match day is tricky just because of the upcoming Champions League. Exactly, and that's a very good point by Red Sky Gaming. We cannot predict the starting 11 as managers seem to rotate main players and give chances to bench warmers. अच्छा, यहाँ पर मेरा एक लॉजिक है. The players who have just been signed, वो ऐसे भी यार इस वीकेंड में स्टार्ट तो शायद ही करेंगे. ठीक है, जस्ट बिन साइन, 2 दिन पहले साइन किए डेडलाइन डे पर. So those people will probably start the Champions League game or feature in that game more compared to the weekend. So I think you can go with tried and tested kind of players, in my opinion. आप लोग बोलिए, what do you think about that? And because again people, मेरे ख्याल से likes कम हो यार, सब लोग like कर दीजिए यार, so that people will come. Let's not have people dropping. And as I said, we'll be discussing literally every game. हर गेम के इंजरीज के बारे में बात करेंगे, हर गेम के बेसिकली players to be picked के बारे में बात करेंगे in terms of FPL language, as well as basically we'll come to other leagues as well, और predictions तो करते ही हम, और आप लोग भी predictions डालते रहना, और like button दबा दीजिए यार सबसे पहले प्लीज, because at this moment Arthur Miller's upgrade on Milner. Okay, आपको लग रहा है भाई, I really doubt it Arthur will start 100%. I don't think we'll start. Yeah, that's my call. Yes, absolutely, उस पर आएंगे. I'm covering the FPL and EPL first. Arsenal United big match coming on. Absolutely, DG Ayush. Why I don't know, but after a long time, I'm seeing Arsenal United as a big match. Do you agree? Well, 100% it's a big match, because technically on paper Arsenal are favorites. लेकिन भाई सबको मालूम है क्या हुआ at Old Trafford versus Arsenal. So it's always kind of there. एक होता है almost like जैसे चेल्सी स्पर्स होता है ना, वी हैव अ कॉन्फिडेंस रादर देन एक नर्वस एनर्जी. लेकिन वही है, बिकॉज ऑफ रीसेंट ईयर जो हुआ है स्पर्स के साथ, वी आर लाइक ओके नहीं, दे कैन बीट अस. एंड सेम थिंग लाइक बिकॉज ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन रीसेंट वीक्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड को लग रहा है कि देयर माइट बी अ केस कि भाई मे बी आर्सेनल आर फेवरेट्स. उस पर आएंगे एब्सोल्युटली. अरे थैंक्स हसीब, थैंक्स रोनाल्डो. Again, I'm a star girl. I'm trying to go game by game to just have some order in the stream. So ठीक है, so game by game जाएंगे absolutely, so that we are doing a preview as well as the FPL together, right? तो मैं star कर रहा हूँ for Manchester United questions as well as Chelsea के. और भाई again don't forget to like the stream यार. Chelsea के fans आ जाओ भाई, कुछ हम बात करने वाले हर एक गेम के बारे में. Okay, Sanchez, Perisic, Schär, Cancelo, Gross, De Bruyne, Sancho, Martinelli, Haaland, Jesus, Mitrovic. I'm going for this team in FPL. Okay, nice. Yes, आएंगे यार. मतलब again, there are literally 20 matches we cover, so we'll come to every game. Let's have a little bit of patience, but thanks a lot. Love all of you, and let's like the stream.
Please, Chelsea, because you are my lucky charm. Well, again, bhai, matlab, I've said the thing, if there are a lot of people who are backing me as well, like you, Darren, bhai, I would certainly do that in the future. But again, the fact is there's so much football right now that it's impossible to cover everything. So, I'm trying to produce content on both the channels, thoda balanced way mein, so that it doesn't affect me and it's doable for me. But again, if we are growing the team, because abhi end to end, like I said, I do it myself, be it thumbnail, be it anything, I'm doing it myself. So if there's any help there for me, definitely I'll be more than open to do literally every content, which I am planning to do, of course, in future. Okay, Milner is in my wow. Let's see. Uh, okay, Gordon might Trent a lot. Yeah, Gordon definitely might, but again, Gordon plays more on the rightish side now, so I don't think it's Trent really. Lekin हाँ, generally speaking, Gordon I think is not a bad choice. थोड़ा differential है, लेकिन I think it's not a bad choice. Why didn't anyone went for Jose Gaya? Because Jose Gaya did not have the season that he had the season before. Simple as that. मुझे लगता है. Nothing apart from that. हाँ, definitely lot of sides को चाहिए थे left backs, लेकिन at the end of the day, भाई, I think he's not kind of world beater जैसे performance नहीं किए. बहुत सारे sides को चाहिए था starting left back. Does he start in most sides? I doubt it at this point in time. It's all about form यार at some point. West Ham, yeah, उस पर आएंगे. Again, people like, share, subscribe. यार talking about left backs ना, उत्कर्ष ने जो पूछा है, मतलब एक लेफ्ट बैक में इस वीक के लिए मैं बोल रहा हूँ. यस, मैं उस मैच पर डिटेल में बात नहीं करूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. लेकिन आई थिंक एक मैच जो सर्टनली मेरे लिए है एक पिक फॉर लेफ्ट बैक. आप लोग अगर एस्टुपिनान को नहीं ले रहे हो ना, तो गलती कर रहे हो. अगर आपने एक करना है सब्स्टिट्यूशन, और इफ यू आर हैविंग एस्टुपिनान नॉट प्लेइंग हिम, दैट्स अ मिस्टेक. आई थिंक एस्टुपिनान इज अ वेरी गुड चॉइस इन माय ओपिनियन. मैं देखने वाला हूँ यहाँ पे कि ब्राइटन का क्या है इन टर्म्स ऑफ फिक्सचर्स. बट अगेन, एस्टुपिनान ने काफी चांसेस क्रिएट किए फ्रॉम लेफ्ट बैक यार एट ब्राइटन. तो आई वुडंट से दैट इट्स अ बैड चॉइस, बिकॉज आप देखिए, ब्राइटन आर प्लेइंग लेस्टर एट होम आज, ठीक है. अच्छा, संडे को है. एंड देन बोर्नमथ, क्रिस्टल पैलेस. हाँ, लिवरपूल बीच में है, लेकिन लिवरपूल टॉटनहम दोनों है बीच में, फिर ब्रेंटफोर्ड, नॉटिंघम फॉरेस्ट. तो आई थिंक एस्टुपिनान इज अ वेरी गुड पिक इन माय ओपिनियन. क्विक एफपीएल टिप यहाँ पर. एंड निको विलियम्स, यस, निको विलियम्स का देखते हैं भाई. आई थिंक दैट्स अ गुड वन. एंड यस, देखते हैं निको विलियम्स के क्या है. आई हैव सीन. ओके, सो नॉटिंघम फॉरेस्ट ऑल्सो डोंट हैव अ बैड फिक्सचर लिस्ट. इनफैक्ट बहुत अच्छा फिक्सचर लिस्ट है. हाँ, उनके खाली मतलब एक दो अभी लास्ट मैच तो पता ही क्या होता भाई, 6-0. सो डोंट गो फॉर सच मैचेस जहां पर आपको बेसिकली पता है कि दे विल कंसीड. बट बोर्नमथ, लीड्स, फुलहम, एस्टन विला, वुल्व्स एंड ब्राइटन है. और इन बिटवीन दे हैव अ लेस्टर, व्हिच इज आल्सो नॉट टू डिफिकल्ट. और फिर अक्टूबर में खेल रहे, लेट अक्टूबर में खेल रहे लिवरपूल के साथ. I think Nottingham Forest is a brilliant pick. Nico Williams, go for it, yeah. Darren bhai, go for Nico Williams. I would say definitely you should play Nico Williams, in my opinion. In fact, maybe so should I take Nico Williams or not? Bhai, what is the latest injury update on Arsenal? I think, yeah, definitely. We are coming game by game. So let's cover that. And yes, of course. So we have started with, of course, Everton, Liverpool. And yes, Everton, Liverpool, मैं बोल रहा हूँ in terms of predictions, again, going by that particular team news, because या लिवरपूल के पास अभी भी है इंजरीज. मैं नहीं बोलूंगा नहीं है, एब्सोल्युटली है. इनफैक्ट कोनाटे इज स्टिल आउट, एंड देन दे हैव हेंडरसन हु इज आल्सो नॉट देयर, आई थिंक, फॉर दिस गेम. मतलब फॉर्म में तो है ही नहीं, लेकिन आई थिंक ही हैज एन इंजरी एज वेल. थियागो, वो भी आउट है एब्सोल्युटली. चेम्बरलिन, ऑक्सलेड चेम्बरलिन पता है हमें. नाबी केटा, ही इज आल्सो आउट. आर्थर इज आल्सो आउट. पीपल, यस, वर्क परमिट इश्यूज आर देयर, सो आई डोंट थिंक इज एलिजिबल राइट नाउ. सो काफी सारे पीपल आर आउट, बट दैट गिव्स अ चांस कि यार मे बी आप लेफ्ट फील्ड जाओ, बिकॉज इतने सारे मिडफील्डर्स आउट है. आई फील अगेन बिकॉज ऑफ लास्ट मैच में जो था फैबियो कार्वालियो के साथ, मे बी he'll come and have an impact. That's what I'm saying. And against an early kickoff, people remember आज it's a derby match proper. And in terms of what do you say, in terms of यार ये थोड़ा ना इंसाफ यार. come on people, let's hit that like button यार. Let's hit that like button. There's a lot to be discussed. We literally bring you all the injury news possible in basically a nutshell. तो भाई सब लोग कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए. एंड ऑफ कोर्स एफपीएल टॉक्स तो है ही, लेकिन अदर लीग्स के बारे में हम बात करते हैं. यू नो दैट वी ऑलवेज सपोर्ट दिस एरिया एज वेल, एंड नॉट जस्ट दैट, ला लीगा एंड प्रीमियर लीग तो है ही. तो पीपल, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, देखिए, इन टर्म्स ऑफ लिवरपूल ना, फैबियो कार्वालियो, आई थिंक यू कैन टेक अ पन. ट्रेंट अगर है तो रखिए. मर्सीसाइड डार्बी है, आई एम टेलिंग यू, समथिंग्स गॉट टू गिव. और एक मिस्टेक्स
रहेंगे, इसमें रहेंगे, तो साला ट्रेंड के साथ जाइए आप, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ओके, एंड यस, मैं जो बीच में आ रहे हैं, अच्छा, आई एम कंफ्यूज बिटवीन नेवेस एंड ग्रोस, whom to start, that's guy gaming is asking. Okay, let me actually take that question quickly. So again, if I'm seeing Neves, just go for the fixture list, yeah, simple as that. Generally speaking, go for Pascal Gross. Okay, Gross is much better, ठीक है, लेकिन अब देखते हैं फिक्सचर लिस्ट इन केस, मतलब अगेन मैंने तो ब्राइटन का देख लिया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वुल्व्स, डू दे स्कोर गोल्स? नॉट इनफ, ठीक है. एंड इन टर्म्स ऑफ फिक्सचर्स, उनके पास है लिवरपूल, मैन सिटी नेक्स्ट 2 वीक्स, तो यहाँ पर इट इज नॉट इवन अ थॉट. आप डेफिनेटली ग्रोस के साथ जाइए, दिस गाय गेमिंग, गो फॉर ग्रोस. अंकित भाई, साला और हालैंड कैप्टन, ये तो डेफिनेटली भाई, हालैंड 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 हालैंड, हाँ मिड वीक में है चैंपियंस लीग, फिर भी मैं बोलता हूँ कंपेयर टू साला भाई हालैंड है. मेरे पास हालैंड है नहीं, इसलिए मैं साला को लिया हूँ. एब्सोल्युटली. आर यू रेडी टू सिंग वन के साथ? शायद, वेलकम भाई, कैसे हो? एंड यस पीपल, दैट रिमाइंड्स मी, मेंबर्स ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, द प्रेडिक्शन लीग इज ऑन. तो मैंने एक मैसेज डाला है, होपफुली एवरीवन हैज सीन. आई डिड गेट अ कपल ऑफ मैसेजेस भाई, लेकिन सब लोग स्कोर प्रेडिक्शंस अपना डाल दीजिए, द कम्युनिटी ऑफ मेंबर्स. जय चेल्सी, थैंक्स थैंक्स. अंकिता, रीस जेम्स का क्या सीन है, विल ही प्ले और नॉट? ही विल प्ले, he will play, looks like he will play, as per the and yes, Chelsea के गेम के बारे में बात कर लेते हैं. yes, by the way, Everton Liverpool यार predictions जो लोग नहीं किए, please let me know your predictions. मेरे लिए it will be a 3-1 Liverpool win. yes. रीस जेम्स का ये है कि यार, बोला है टुकल ने कि यार we have no injury concerns apart from maybe an N'Golo Kante and I believe, हाँ वही है ना, खाली N'Golo Kante is what the major injury is, and I'll just recheck it once again, but that's what I believe so. In terms of yeah, by the way, Dennis Zakaria is not available for Chelsea fans. Yes, we are playing West Ham at home. At home हमारा फॉर्म इतना बुरा नहीं है as compared to away, तो I think I'm still confident. But even Aubameyang, he is having a jaw injury. आपको पता है, he's out for maybe around 2 to 3 weeks. तो देखते हैं, मतलब when he's fit, he's coming back. तो please don't take your new transfers or deadline day yet. अभी मैं बोलता हूँ, wait for just 1 game week and then let's see. How many cards will we see in Merseyside derby today? Exactly, मैं बोला ना, battle रहेगा जैसे मैंने शुरू किया. I think I'm seeing a lot of cards. Let me see, at least 5 cards होंगे total 5 cards होंगे. Let's see. Okay, I would love to see you one-on-one conversation, Sadiq bhai. Yeah, he comes a lot on the channel, bro. Utkarsh, पता नहीं आप इतने regular हो कि नहीं, but thanks for joining again on both the channels. In fact, even now I had invited Sadiq bhai, लेकिन he was not free, so it happens all the time. No problem at all. It's all one. खाना खा लिया? अनूप भाई कैसे हो? नहीं, खाएंगे यार, खाएंगे डेफिनेटली, इसके बाद ही खाएंगे. I'm the only Chelsea fan not to buy a single Chelsea asset at FPL. Yeah, and the same I feel. I think I'm the same. नहीं, मैंने किया है, रीस जेम्स को लिया है. तो सब लोग रीस जेम्स के बारे में पूछ रहे हैं यार, वो अगर अवेलेबल है ना, हाँ, अगर 100% नहीं है तो काफी रिस्की होगा, बट आई थिंक ही विल प्ले बिकॉज कंसिडरिंग कि I don't think Fofana is 100%. Yes, it's a different position. लेकिन मैं बोल रहा हूँ जनरल डिफेंसिव कवर ना, Aspilicueta hasn't looked good as a starter for me. Or it's a derby match. Yes, you need your captain. लेकिन still I would be hesitant considering जो physical element है of West Ham. So that's why I'm being very very careful. And talk about West Ham ना, last time आपको याद है Chelsea West Ham क्या हुआ था? Last time it was very very close match, और West Ham के साथ we have had मतलब first leg last season में मेंडी ने हक दिया था यार, सबको याद है वो. आई थिंक एक वाइड शॉट आया था, ऐसा किया था, पाम किया था, पाम लग के गोल में चले गया था, ठीक है. एंड वी काइंड ऑफ लॉस्ट 3-2 इफ आई रिमेंबर राइट. और वो इट वाज वेरी वेरी सैडनिंग, और मेसन माउंट स्कोर डिड वेल इन दैट मैच, लेकिन ही इज नॉट इन फॉर्म. बट सेकेंड मैच जो हुआ था, दैट वाज एन एक्सीलेंट मैच, क्योंकि फर्स्ट वी गॉट पेनल्टी, और फिर जॉर्जिनियो ने हक दिया पेनल्टी, एंड देन यस, बाय द वे उनकी गोलकीपर काफी अच्छे है, फैबियांस की. एंड last moments mein bhai, it was Christian Pulisic who got a winner, but will he start? Probably not. Yes, Mason Mount has not been informed, so has been Havertz. आप लोग बोलिए, Chelsea versus West Ham, what is the 11 जो आप शुरू करेंगे यहाँ पर? Yes, absolutely, we will be watching it. Sayan, absolutely करेंगे, watch along शायद try करेंगे, देखते हैं if you are able to. I'll check the TV schedule, लेकिन कुछ नहीं. I'm good. How are you, Sayan? जकारिया प्लेयर कैसा है भाई? प्लेयर अच्छा है फॉर यूवेंटस. अगेन मैंने 2-3 स्ट्रीम्स किए निखिल, आई डोंट नो इफ यू सॉ मी ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी एंड एज वेल एज रेड लेन, लेकिन ही विल नॉट स्टार्ट, ही हैज वर्क परमिट इश्यूज. ऑल्सो यस, Tuchel has for whatever reason in this interview said कि भाई Zakaria has to play center back,
He has good pace, strength, so he can play right wing back, just like a Loftus Cheek. Man, I'm like, How about new? भाई टुकल को क्या है इतना फैसिनेशन विद विंग बैक यार? क्या है जकारिया इज विंग बैक? मतलब कोई, नो वन वुड हैव इवन थॉट दैट. आई होप ही डजंट यूज हिम एज विंग बैक, बिकॉज वन पोजीशन दैट वी डिड नॉट हैव एक प्रॉपर प्लेयर. यस, बिली गिलमोर वाज देयर, लेकिन टुकल काउंट नहीं करते थे. ऑल द बेस्ट टू हिम एट ब्राइटन. लेकिन भाई जकारिया फाइनली नीड्स टू बी यूज्ड एज अ डीएम. इस मैच में आज के लिए ही विल नॉट बी यूज्ड बिकॉज वर्क परमिट अभी तक नहीं हुआ है क्लियर, फ्रॉम व्हाट आई नो. फफाना विल प्रॉब्ली स्टार्ट. हाँ, प्रियांश कैसे हो भाई? नाइस टू सी यू एज ऑलवेज. इन बिहाइंड को शाउट आउट है. देखिए यार प्रियांश, मैं बोलता हूँ ही इज नॉट फिट. सच में बोलो तो ही इज नॉट फिट, क्योंकि उन्होंने मिस किया है. रिमेंबर वो स्ट्राइक पर थे लेस्टर के साथ. और या बिग रेस्पेक्ट टू ब्रेंडन रॉजर्स. यार ब्रेंडन रॉजर्स ने बहुत अच्छा बोला है इन टर्म्स ऑफ बेसिकली ही इज अ वेरी गुड लैड. आई थिंक जो सोशल मीडिया में उस पर जो हो रहा है स्पेशली फ्रॉम लेस्टर फैंस इज अनफेयर, बिकॉज ये खुद नहीं बोलता कुछ जो हो रहा था इन द मीडिया. सो प्रोबेबली इट्स हिज एजेंट्स एटसेट्रा हु आर डूइंग इट, जो सोशल मीडिया में पोस्ट डाले थे ऑल दैट, यू नो, वीक बिफोर कमिंग टू चेल्सी. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही वाज ऑन मेंटली देयर. अभी यार ही इज एक्साइटेड, लेकिन वो 2 हफ्ते आई थिंक ट्रेनिंग मिस किया बंदे ने. यस, with Chelsea is training and I can see that he's putting in the tackles in training. Lekin will he start? I doubt it. I doubt it really. Okay, let's see. Ankit bhai, Broya, Havertz, Sterling, Kova, Jorginho, Kukurea, James, Silva, Koulibaly, Fofana, Mendy. This is my lineup. Okay, interesting that. So basically आप क्या बोल रहे हो? That looks like you're going Silva and Koulibaly and Fofana. So you're going 3 at the back. Okay. So you're going 3 at the back therein. और हाँ, going by जो wing back बोला है Tuchel ने about Zakaria is an option, just an option, just to correct you and myself. But at the end of the day, you know, it seems that 3 at the back ही जाने वाले. As much as मैं चाहता हूँ 4 at the back, maybe eventually हम करें, लेकिन पहले I think recent 2 matches में we started with 4 at the back. It has not worked to begin with. So that's why he might go back to 3 at the back, which I don't agree, but ये मेरा prediction है. तो yes, डेरेन का जो लाइनअप है ऑन स्क्रीन, इससे मैं चेंज करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं सोच रहा हूँ. आई थिंक यू नो व्हाट, मैं खेलूंगा माउंट को, बिकॉज ब्रोया और हैवर्ट्स दोनों, यू नीड दैट. यस, वेस्ट हैम फिजिकल गेम होगा, वहां पर जूमा है भाई, जूमा हैट्स ऑफ भाई, हमारे एक्स प्लेयर. लेकिन देखिए वहां पर या यू नीड एक्स्ट्रा फिजिकल एलिमेंट, लेकिन इन माय ओपिनियन माउंट का फिजिकलिटी इज काइंड ऑफ अंडररेटेड. यस, नॉट इन फॉर्म, लेकिन हैवर्ट्स भी नहीं है. तो आई वुड रादर हैवर्ट्स जो इतना गेम खेल रहे ना, माउंट थोड़ा यूज टू उसके लिए, तो माउंट को कंटिन्यू करूंगा मैं. माउंट, ब्रोया एंड स्टर्लिंग का मेरा रहेगा फ्रंट 3. एंड देन कोवाचिच. यस, ब्रेकिंग न्यूज इज FPL मैनेजर्स, आई वुड से कोवाचिच को अभी मत लाइए. अगेन विल कम टीम बाय टीम में कर रहा हूं, तो FPL मैनेजर्स को टिप्स मिलेगा फॉर ईच गेम. इस गेम में बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट भाई चेल्सी काफी कंसीड करती है, आई एम आल्सो हेजिटेंट विद डिफेंडर्स. लेकिन जेम्स इज दैट गाय जो मैं बोल रहा हूं भाई, टेक हिम. आई थिंक अगर वो फिट और क्लोज टू फिटनेस है, ही विल प्ले. तो आई वुड से टेक जेम्स. लेकिन कोवाचिच, द रीजन आई एम सेइंग ब्रेकिंग न्यूज इज बिकॉज निजार कंसला ने बोला है दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जो टुकल ने बोला था कि ही माइट हैव नीडेड सर्जरी. इसीलिए हमने किया डेडलाइन डे साइनिंग जकारिया, बिकॉज वी नीड दैट कवर इन मिडफील्ड. ऑलरेडी वी आर हैविंग कांटे भी जो बहुत इंजरी प्रोन है. तो अगर सर्जरी होता है भाई, यहाँ मैं क्या ही तो बोले यार, अगर सर्जरी होता है तो भाई चेल्सी के बारे में आप क्या बोलोगे यार? मतलब इज दैट, आई नो पॉगबा के साथ और बेसिकली यू नो इतना सारा विच डॉक्टरों से हो रहा है. आई थिंक चेल्सी के साथ कुछ तो हो रहा है विद इंजरीज दिस टाइम. आई डोंट नो, लिवरपूल एज वेल आप बोल सकते हो. लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग लाइनअप, yeah, I can see that Fofana will come off the bench मेरे ख्याल से, because of that fitness issue अभी के लिए, match fitness. और definitely he'll come off the bench. First starter रहेंगे चालोबा for me, that is my call. डेरेन खाली 2 चेंजेस किया हो स्टार्टिंग लाइनअप से, तो अगेन फॉर FPL पीपल नोट दैट. किसको बनाऊं कैप्टन? केन, साला और जेसूस. तो अगेन मैं देख रहा हूं यहाँ पे फिक्सचर्स, लेट मी सी द फिक्सचर्स. तो भाई आर्सेनल के फिक्सचर्स देखिए आप. अगेन okay, so they have Manchester United, right? Okay, for this game week, you know what, I would say, I don't know, take a chance with Salah na. Merseyside derby nahi. I think Spurs have also West, I think it's a derby, but Fulham hai,
So you know what? I'm changing my mind. I think I'll go with Kane. You go with Kane अभी के लिए. I know Kane has not been मतलब chances इतना create नहीं करते than a Jesus और a Salah, लेकिन Kane gets in the box. और फुलम के साथ वही देखा है भाई, सेकंड हाफ परफॉर्मेंसेस इतने अच्छे नहीं रहे कंपेयर टू फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंसेस. सो आई फील दैट केन माइट जस्ट गेट अ गोल अगेन. तो केन के साथ चाहिए इन तीनों में कैप्टन इस वीकेंड में. Will Regis play? Yes, it looks like he'll play. Will Mount and Havertz be dropped? I think Tuchel should. Well, Priyansh, प्रॉब्लम है कि अगर ड्रॉप करते हो तो किसको लाएंगे यार. हाँ, इवेंचुअली आई फील दैट देयर माइट बी अ केस टुकल ये भी ट्राई करने वाले इन फ्यूचर. आप देखिए ब्रोया विद अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल दैट भाई, तो ही माइट स्टार्ट विद ब्रोया अप फ्रंट, and left wing he might start Aubameyang, right wing he might start Sterling someday. लेकिन can you drop Mount, Havertz and Pulisic as well as Ziyech? I doubt it. तो मुझे लगता है जो ट्राइड एंड टेस्टेड होगा फॉर टुकल स्टार्टिंग से सितंबर एंड, तब Aubameyang will start, left wing will be Sterling and right wing will be Mount to begin with. लेकिन आई कैन सी हैवर्ट्स फॉर एग्जाम्पल रोटेटिंग विद माउंट. मुझे नहीं लगता दोनों ड्रॉप होंगे इस गेम वीक के लिए, आज के लिए. दैट इज आई फील दैट दोनों में से एक जरूरी है बिकॉज वी डोंट हैव अ पुलिसिक और जिएक और यू नो कॉन्फिडेंट एज वेल एज नॉट ओबामियांग फिट. तो दैट इज द ओनली रीजन मैं बोल रहा हूँ. सिल्वा इज टू ओल्ड फॉर बैक फोर. डेरेन I don't agree with that, to be very honest. I don't think Silva. No, in fact, आप देखिए, even in back four, Silva has been one of the better performers. I don't think Silva को आप बोल सकते हो. हाँ, maybe the others maybe are not as good. वो आप you can argue. लेकिन it's not about that. It's more about the chemistry with the Koulibaly. It's more about the chemistry with the Kukurea. क्योंकि back four, back five जैसे भी है, we have got new players. Remember that. Fofana. So I think it'll take time, but हमें try करना चाहिए. And off the pitch, well, again, I know that what he's saying again that was not right. Lekin on the pitch he's really good yaar. Since Broya signed, will he start? Yes, this ye match mein shuru karna hai bhai. I know all Chelsea fans want Broya to start. He had more impact in 3 minutes than Havertz is 1 hour. So please start Broya. I think आज चार्लिसन तो खेलना चाहिए in place of Son. Wow, that's a big one. Yes, by the way, मेरा FPL team में I think I had Son in one of the FPL teams and he's not been doing well. So people, should I change Son? I know that deadline is coming closer, but that is a point. But anyway, people, let's go with the हमने predicted 11 कर लिया है वो Chelsea. And of course, in terms of fixtures, generally I would not be very confident when it comes to Chelsea players to pick. हाँ, एक और मैं बोलना चाहूंगा, Sterling को pick करिए यार. अगर if you have a transfer and if you have basically around 10 million ना, तो Sterling is a very good pick. अभी the fact that Aubameyang has come in the future matches भी मुझे लगता है he will definitely create and he will definitely score. और असिस्ट और गोल्स में हाई है और चांस क्रिएशन में भी उनका हाई है, तो बोनस पॉइंट्स में यू कैन गेट अ लॉट ऑफ इट. और ऑफ कोर्स ही विंस योर पेनल्टीज एज वेल. तो आई थिंक स्टर्लिंग इज अ गुड चॉइस फ्रॉम एन FPL पर्सपेक्टिव अगर आपके पास है 10 मिलियन एंड ट्रांसफर, राइट. लेकिन हाँ, अगर आपके पास हैवर्ट्स है भाई, बेंच हिम और सब हिम, सिंपल एज दैट. आई डोंट थिंक यू नीड टू कंटिन्यू हैवर्ट्स. And yes, Kane is useless because he drops too deep in midfield. That makes his chances too low for scoring. लेकिन Derin, he has been scoring. Let's get it right. ठीक है, वही है. He needs and moments. He's a moments player. He'll get that for me in the contest system. Along with Arsenal versus United, a derby, or do I not know what the derby is? Okay, so I will not call it a derby. Derby is basically यार एक ही शहर से दो टीम्स खेलते हैं तो उसको derby बोलते हैं technically speaking. लेकिन Arsenal United is a rivalry. Definitely is one of the rivalries, especially during Fergie Wenger era. और बहुत rivalry मैंने देखा यार. Roy Keane और of course Patrick Vieira. Those are the things that which comes to mind for me. Absolutely brilliant. Team review कर दो यार, definitely करेंगे. If Havertz starts, I am done with that guy. Oh my God, Abhishek, come on. बेचारा. But I hear you actually. Big up आपको यार, कैसे हो Almighty board member अपने. Who will take penalty, Jorginho or Sterling? You know what? It will be Jorginho. It will be Jorginho. I don't think वहाँ पर change होने वाला है. लेकिन the fact that Sterling chances create कर रहे हैं काफी ज़्यादा, तो I think it's a good choice. Okay, delete one, Milan, Carlo or Inter Jose. Come on man. I think you know what, भाई इंटर जोसे मैं बोलूंगा. आई नो आई लव जोसे मोर देन कार्लो एंचेलोटी, लेकिन बिकॉज यू सेड इंटर जोसे ना, इसलिए क्योंकि उन्होंने हराया था चेल्सी को. आई एम जस्ट टेलिंग यू, मिलान कार्लो व्हेन आई इज अ लेजेंड एज वेल. पकेटा एंड डेक्लन राइस थ्रेट फॉर चेल्सी टुडे. बिल्कुल, और वही है. अमन उस पर आ रहा था ऑपोजिशन में. देखिए, I don't know if you guys have heard. Thiago Silva actually recommended Paqueta और ट्राई किए थे. Problem with Paqueta is
और Declan Rice तो हम obviously have been chasing for good, and not just that, Souček, Aman and everyone, Souček is a threat in the box as well. He has got a goal against Spurs, so you never know, he might come back to the Souček form ना. पकेटा का ऐसा प्रॉब्लम था कि यार वी डोंट हैव अ पोजीशन फॉर हिम, सिंपल एज दैट. हमें चाहिए थे मिडफील्डर्स, बट ही इज लाइक अ कैम रियली. ठीक है, ही डजंट प्ले दैट वाइड एज वेल. तो आई थिंक probably he is best suited in a 4-2-3-1 kind of formation system बोलता हूँ तो पकेटा. और मे बी आप बोल सकते हो 4-3-3 with two number 8. हम वो खेलते हैं as of now, not really. So he is more like a number 10/number 8. He is not a number 6 who is a playmaker जो हमें ज्यादा चाहिए था अभी के लिए. भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड was asking something I want to see this week. देखते हैं या बिल्कुल उस पर भी आ रहे हैं just about. Who should be blamed when there are so many injuries in team? Trainers or medical staff? I think honestly it's a bit of both. It's a bit of both. You have to basically maintain yourself, but at the same time, आपको पता रहना चाहिए what is your kind of diet, what is your एक होता है ना regime for a few days. So that medical staff he create करती है and they follow up as well. Okay. So in terms of West Ham, अगर आप लेफ्ट फील्ड जाना चाहोगे, and yes people, predictions कर दीजिए यार, चेल्सी वेस्ट हैम क्या होने वाला है in terms of score predictions. You know what? West Ham, by the way, they are also missing Ben Johnson, if I'm not wrong. Cresswell is not 100% fit, लेकिन मुझे लगता है Cresswell शुरू करेंगे. I know, by the way, Emerson भी है वहां पर, लेकिन I think if I'm not wrong, I think Emerson did not start the last game. ठीक है, तो Emerson may not start again if Cresswell is fitter. तो वहां पर don't take a chance. Aguerd is the long-term injury for West Ham United. लेकिन I think Skamasa also is having illness still, so I doubt if he'll start. लेकिन हाँ, I think the chat is right. Paqueta can be a great impact. Last game almost he had a chance. I think a good chance against Spurs. लेकिन again, आप pick करोगे. I think if anyone you have to pick from West Ham, I think Fabianski has to be that guy for me. Fabianski definitely लिए. He is a consistent scorer in FPL. ठीक है. फ्यूचर प्रेडिक्शन, यस डेफिनेटली उस पर आएंगे. नहीं यार, हम उतना तो नहीं करेंगे. एज इट इज देयर आर अबाउट 20 मैचेस टू कवर यार. यूसीएल वी आर डूइंग अ प्रॉपर स्ट्रीम. वी ऑलवेज डू एवरी स्ट्रीम फॉर मेजर टूर्नामेंट, तो हम करेंगे एब्सोल्युटली. रॉनी प्लीज, थैंक्स फॉर कमेंट. आई थिंक भैया डेक्लन वुड बुली जॉर्जिनियो. वही है, मिडफील्ड में भी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास है नहीं ना, प्लेयर्स है नहीं. तो मे बी, जस्ट मे बी मैं बोल रहा हूँ दिस मैच में आई थिंक आप गए थे कोवाचिच दे रहे, लेकिन on that note maybe Loftus-Cheek will probably start. हाँ, लेकिन Loftus-Cheek भी 100% fit होंगे कि नहीं, थोड़ा क्वेश्चन मार्क है. लेकिन Tuchel as per the press conference बोला है कि यार he's probably fit. So going with that, I think Loftus-Cheek might get the nod over Kovacic, because last match Kovacic wasn't 100% fit for 45 minutes. फिर भी वो आए थे जल्दी, right? Okay. Who will be a key marking by Liverpool defense today? कौन से Everton player को mark करेंगे? You know what? Gordon. For me, Gordon has to be the danger man for Everton, and it has to be basically, I think it's about the Liverpool centre back. यार, Virgil van Dijk या पहले दो मैचेस में नहीं लग रहे थे. The guy he was, and of course the partner जो है उनके साथ, I think he'll be probably most important in my opinion. Okay, how much backing up to that guy? Just to we play with 10 men. Okay, you're saying Havertz, right? No, I'm not backing him or something like that, Abhishek. लेकिन वही at some point we all should remember that the guy is really young और उसके पास skills है. Yes, he's not been applying himself, that's Havertz. लेकिन फिर भी I would say that आप अगर carefully देखिए, again you did see my review, I'm pretty sure. आप देखिए first 20 minutes in the last game where we actually didn't do well as a team also. He actually had that final pass which went to Mount and then to Sterling, which created a goal. और second चीज है, उन्होंने actually goal करना था. He missed a sitter of a header. He missed a sitter of a shot directly to goalkeeper मारा. लेकिन एक और बढ़िया रन था जो Sterling miss की थी, तो miss किया था. तो I think there is a argument that Havertz is low on confidence because of maybe not being played in as well enough times. लेकिन not a starter. I 100% understand. It should not be a starter. लेकिन अगर होते हैं, only reason being that हमारे पास कोई है नहीं इनफॉर्म स्ट्राइकर्स और फॉरवर्ड लाइन में, अपार्ट फ्रॉम मे बी स्टर्लिंग. दैट्स द ओनली रीजन अगर स्टार्ट करते हैं. मेडिकल का नाम मत लो, लिवरपूल मेडिकल टीम. अरे चेल्सी लिवरपूल दोनों ही अभी सेम है, जैसे मैंने बोला. जीएश राइट, अंशुल बोल रहे हैं ब्रोया सेंटर एंड स्टर्लिंग लेफ्ट टुडे, पुट बैक 4 जेम्स. ओके, बैक 4 फोफाना कुलिबाली. यार फोफाना अगेन ही इज नॉट 100% फिट अभी, सो आई डाउट इफ ही इज गोइंग टू स्टार्ट करे तो आई थिंक अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है. यू आर पुटिंग प्रेशर ऑन फोफाना इन माय ओपिनियन. ही इज नॉट 100% मैच फिट because of missing training last couple of weeks. But again, why don't we go for a back four with
maybe Silva, Koulibaly or Fofana plays in Champions League, I would say. भैया everyone's talking about Arsenal and Man United, but they forgot Merseyside derby. हाँ, हमने बात किया यार और हम Arsenal Manchester United तो करेंगे ही absolutely. विप्रा मतलब कैसे हो? Will the main player of West Ham miss today's match? Okay. Like I said, I don't know whom you're pointing to the main player, but in my opinion, I think Rice, Suchek, Bowen, and Antonio all are main players, and वो खेलेंगे. Simple as that. I'm not sure which you're referring to. By MJ in the house, man. MJ, thanks for joining in. Can Liverpool keep a clean sheet today? I think थोड़ा सा Merseyside derby ना, तो I can see a penalty coming. मैंने 3-1 किया है. And because of Liverpool का central defense इतना मतलब convincing नहीं लग रहा, that's the only reason. And win तो definitely Liverpool ही करेगी यार, especially basically being versus Everton. Okay, who will be the most important player in today's match, including both teams, in your opinion? Well, Ronnie plays for me, definitely, like I said, Chelsea के लिए the guy that is the inform guy जो है Sterling है, 100% Sterling है. और for West Ham, because of Chelsea का defense leak कर रही है अभी के दिन में, it has to be, and हमारे set pieces काफी बुरे हैं, तो someone with strength, someone with good heading ability, वो है Suchek and Antonio. ये दोनों players हैं मेरे लिए. What changes this week for your Chelsea after last week? Yeah, very good test against Arsenal. Looking forward. Yeah. Again, मैंने cover कर लिया है. From what's the point of 5 subs when Chelsea will be down to 10 minutes 38 seconds? Wow, that's a pun proper. लेकिन भाई ऐसे भी 4 subs ही use करते हैं Tuchel. I've observed that. लेकिन I think अभी finally signings आ गए. We are having a lot of injuries. People remember we are having a lot of injuries अभी भी. तो yes, on paper खाली कांटे हैं. लेकिन again, Aubameyang is not 100% fit. We have work permit issues abhi bhi, I believe it's not sorted fully when it comes to Zakaria. Then Kovacic और Loftus Cheek भी इंजरी से वापस आ रहे हैं, रीस जेम्स भी वापस आ रहे हैं, so they will not be 100% fit. Fofana 100% fit, match fit नहीं है because of missing injury. Okay, we looked amazing against Foxes when Mount was subbed, so for me Mount should be dropped. Pulisic or Ziyech must start. Okay, I think that I will take Abhishek, क्योंकि the fact is Ziyech, मैंने तो बोला अभिषेक और सब लोग भी सुनते हो भाई, he is someone who has that cutting pass जो बाकी लोग के पास नहीं है. That is why I might actually start Ziyech. I hear you absolutely. Or also Cresswell is not 100% fit, and Emerson I don't rate him that much as I liked him, his attitude. So you have a point, certainly Ziyech starting. And of course Ziyech or Reece James have a thing going in the past, so maybe वहां पर एक बढ़िया मौका है चेंज करने का. Do you think Bahubali is underperforming? He is 100%. He is. Bahubali is underperforming. भाई Koulibaly, जग जाओ यार, जग जाओ. थोड़ा ऑन ऑफ हो रहे भाई. I don't know why. थोड़ा I know new team है with Silva, with Kukurea is still gelling. अब देखते हैं hopefully. But he's a good player, man. Very good player. Will Haaland score hat-trick against Aston Villa? आते हैं भाई, उस पर भी आते हैं भाई. नेक्स्ट वाला करते हैं भाई. Next move on. Yes, there's a lot of discussions to do on. Again, do not forget to like the stream. यार थम्स अप दबा दीजिए, सब लोग आ जाएंगे तो मजा आएगा और भी. ठीक है, अभी यार बड़ा सबसे मैच. और यस, आई डोंट सी एनी स्कोर प्रेडिक्शंस येट. Chelsea versus West Ham. I am being very very circumspect, and yes, by the way, Chelsea अभी हग रही है proper in terms of the table. यहाँ मैं almost embarrassed to kind of show the table, but it's just 5 games हुए. 6 game में do I see a Chelsea win? You know what, मैं थोड़ा हो सकता हूँ नेगेटिव हूँ या circumspect हूँ. As things go, मुझे लग रहा है कि West Ham are slowly but steadily coming in that form जो missing था in the first couple of weeks. Whereas Chelsea का लग नहीं रहा है कि यार they will be able to keep clean sheets. तो मैं देख रहा हूँ अगेन फॉर वेस्ट हैम विल बी अ स्कोर ड्रॉप. एंड यस, स्कोर ड्रॉप होगा चेल्सी का. आई जस्ट फील दैट वेस्ट हैम दे हैव सो मच फायर पावर ना, इतने सारे साइनिंग्स किए ना, they have so much of the bench and we don't have that confidence of the bench compared to West Ham अभी, and that's for real. मैंने बोला है तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर I am calling it a very very मतलब एक proper derby, just like a Merseyside derby, लेकिन high scoring game. I am saying 2-2 is what I'm saying. And yes, last season भी आपको याद हो तो पहला गेम जो था 3-2 था, सेकंड गेम आई नो लो स्कोरिंग था, लेकिन we should have got two goals. I'm saying definitely 2-2. Who's your favorite of today's red? I know we get red cards for fun. Gallagher, by the way, should be back. But again, do I see him starting? I doubt it. Do I see him coming off the bench? Yes, I see that absolutely. मुझे लगता है अगर कोई है ना रेड कार्ड के लिए प्रोन, आई फील दैट मे बी इट्स अ वेस्ट हैम प्लेयर. आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर. मे बी मैंने बोला ना स्टर्लिंग विंस यू पेनल्टी, सो स्टर्लिंग विन अ पेनल्टी एंड मे बी आर ओल्ड गाय दैट इज जुमा को मिलेगा रेड कार्ड. मैं सिर्फ बोल रहा हूँ लास्ट मैन.
Let's see if I'm correct or wrong. I believe both team will score today, but Chelsea will be late winner. Okay, if Broya and Kante will play. Kante will not play. Ronnie is injured for sure. What happened to Mount set pieces and corners? Exactly. I am missing that, bro. I am missing that. I'm telling you, by Mount ka he puts that delivery. It is highly underrated. Yes, not been in form absolutely. That is where you need to use your other skills. अरे क्या कमेंट था भाई आपका शायद. ओके भाई, गुड थिंग अबाउट लिवरपूल इज थियागो, एलेक्स और चेम्बरलिन को छोड़ के बाकी सारे वापस आ रहे हैं. जोटा, मैटिप, रामजे, कर्टिस, कोनाटे सब या जैसे मैंने कवर किया ऑलरेडी. आई थिंक शायद यू जॉइन लेट, लेकिन वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम मर्सीसाइड. अभी हमने पूरा कवर किया था इन टर्म्स ऑफ बेसिकली द इंजरी न्यूज. ओके, डेक्लन क्या बुली करेगा, जॉर्जिनियो को दम है, वो तो कांटे को बुली करने. अरे भाई कांटे है नहीं यार आज के मैच में, क्या ही बोले. ही इज आउट फॉर सर्टेन नंबर ऑफ वीक्स इन फैक्ट. Okay, do you think Tuchel might be tricky and put Gallagher in front three instead of Havertz and Mount? I doubt it. हाँ, he should. He's a more number 8. लेकिन I doubt it. क्योंकि Gallagher as much as यार he is that, एक होता है ना, I think वो ज्यादा ही zealous लगे हैं, तो I think we won't take the chance of getting an early yellow card again. And it's a dummy, remember. Gallagher is through and through Chelsea. तो मुझे लगता है he might actually go with a little bit of experience with either Ziyech, Havertz or Mount. वो है मेरा kind of call. देखते हैं. डर है वेस्ट हैम से, निखिल बोल रहे हो. माय गॉड, व्हाट हैपेंड माउंट सेट पीसेस, वो ले लिया था हमने. नहीं, स्कमासा आई थिंक 100% फिट नहीं है, तो आई डाउट इफ ही विल स्टार्ट. लेकिन हाँ, ही ऑफ द बेंच ही कैन बी डेफिनेटली अ गुड चॉइस एब्सोल्युटली. आई डोंट सी चेल्सी विनिंग. R9 इन द हाउस, कैसे हो भाई? लेकिन हाँ, वही है, मैंने भी ड्रॉ के लिए गया है. एंड यस पीपल, स्कोर प्रेडिक्शंस कर दीजिए. टोनी और आइजैक फॉर FPL. चलो FPL का थोड़ा हो जाता है क्विकली. Again, I am looking at Ivan Toney, Brentford. भाई मैं ब्रेंटफोर्ड का काफी अच्छा मैच है. लीड्स. अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ. आई नो टोनी और आइजा का पूछा है भाई. आई थिंक इन दैट ओपिनियन अभी के लिए आई वुड स्टिल ट्रस्ट टोनी, बिकॉज टोनी का हमने देखा था ब्रेंटफोर्ड का लास्ट वीक भी हमने जब किया था डेडलाइन स्ट्रीम. दे हैव अ गुड सेट ऑफ फिक्सचर्स. दे आर प्लेइंग लीड्स, साउथहैम्पटन, बोर्नमथ, ब्राइटन और बीच में आर्सेनल है, न्यूकासल है. तो आई थिंक वहां पर आइजैक का भी सिमिलर होगा. लेकिन अगेन न्यूकासल आल्सो हैड अ डिफिकल्ट स्टार्ट, उनके भी इजी होंगे. लेकिन अगर आपके पास टोनी है, डोंट सब हिम. अगर आपके पास नहीं है इनफैक्ट टोनी, सो आइजैक बाय द वे इज नॉट 100% फिट. ये भी एक रीजन है. तो गो फॉर आइवन टोनी अभी के लिए. ठीक है, अभी के लिए जस्ट स्टिल गो फॉर आइवन टोनी. लेकिन आइजैक जब 100% फिट हो जाते हैं, यू आर श्योर, देन गो फॉर आइजैक बिकॉज ही इज अ गोल स्कोरर नेचुरल. लेकिन हाँ, अगेन कैलम विल्सन आने के बाद देयर माइट बी रोटेशन, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आइवन टोनी जो शुरू करेंगे. लेकिन मैं एक चीज मैं बोलता हूँ भाई, लीड्स के साथ खेल रहे हैं ब्रेंटफोर्ड. यहाँ पर FPL के लिए स्पेशली याद रखिए, एक बंदा है टोटली लेफ्ट फील्ड, और ये बंदा काफी लोगों ने नहीं देखा होगा भाई. नॉन्टो करके एक बंदा है, मैं यहाँ पे मैं खुद ही कर देता हूँ. विल्फ्रेड नॉन्टो. I don't know if you know this guy. This guy is coming from the Swiss league, if I'm not wrong. और भाई ये बंदा is an Italian. He is awesome. Trust me, he's awesome. Dan James को they have sent on loan, right, to Fulham. Nonto is the guy, ये वाला. ये लेफ्ट फील्ड डिफरेंशियल के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस होगा. मैं बोल रहा हूँ, इट्स अ न्यू ट्रांसफर. यस, ही माइट नॉट प्ले दिस वीकेंड, लेकिन ये नाम याद रखना जरूर. आई एम टेलिंग यू, ये लीड्स द वे दे प्ले बाय दिस गाय विल मतलब डू ग्रेट स्टफ. फिनिशर इतने अच्छा नहीं है, इज अ विंगर, लेकिन ही इज बेसिकली वाओ, व्हाट पेस एंड चेंज ऑफ पेस उनका जो प्रीमियर लीग में प्रॉपर चलेगा. विल्फ्रेड नॉन्टो, ही रिमाइंड्स मी ऑफ ओडोंकोर, एक जर्मनी के प्लेयर हुआ करते थे, आपको याद है तो. एंड यस, नेशन लीग में यस बिल्कुल he was in, हम वॉच अलोंग में भी बोले थे. I had told that during नेशन लीग, भाई ये तो मेरा फेवरेट प्लेयर है भाई फ्रॉम इटली इन द फ्यूचर. नॉन्टो इज अ ब्रिलियंट प्लेयर. आई एम टेलिंग यू, ये बंदा सच में अच्छा है. अरे बिप्रा, अरे भाई आते हैं बिप्रा, क्या किया आपने? ओके, कैसेमीरो वर्सेस लोकोंगा. आज बहुत डर लग रहा है, और मिडफील्ड में चलो कोई नहीं. Meanwhile, R9 is in Havertz is not playing his original position. He can't be a forward. He was more of a number 10 or cam in Bayer Leverkusen. So comparing with other strikers has to be stopped. Yes, but at the same time, yeah, I think he also needs to be better. Let's agree there. Like, I agree both the points. Is he your favorite to start? R9, do let me know what's your starting 11 for Chelsea. Lekin again, coming to the big game. Big game, obviously. By the way, मैंने तो मेरा comments दे दिया in terms of predictions 2-2 है. And yes, people, again, do not forget to like, share, subscribe before going to the big game. Again, यहाँ पर नीचे एक जा रहा है भाई, we are monetized on the channel.
Again, I'll try and take as many comments as possible, but you know it's humanly impossible for me to take, especially जब मैं 20 मैचेस के बारे में बात करूंगा, right? And why 20 matches? Because we are talking about other leagues as well, as we always do. It's a fan channel for all to see. So please, you know, remember to like, share, subscribe. लेकिन अगर आपको करना है prioritize अपने comment, तो you know, feel free to super chat. I'll try and do that. लेकिन I'll try and take other comments as much as possible. So please, you know, support me and all the channels as well. तो यहाँ पर big match है Manchester United versus Arsenal. Now let's be honest. You know, Manchester United have had the better of you know, Arsenal at Old Trafford. You know, that's simply put. ठीक है, लेकिन यहाँ पर the thing is, Manchester United, will they start Cristiano Ronaldo? क्योंकि in my opinion there will be a point जहां पर उन्हें शुरू करना है, but they have got 3 back-to-back victories, तो it's very doubtful कि Cristiano Ronaldo शुरू करेंगे, और that's for real even against Arsenal, because why would you change something which is not, you know, broken? Simple as that. In terms of हेड टू हेड, मैंने जैसे बोला भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट ईयर आई थिंक 3-2 जीते थे आर्सेनल के साथ, एंड दैट वाज अ गुड मैच इन दिसंबर. बट बिफोर दैट आई थिंक लास्ट विक्ट्री मिली थी आर्सेनल को इन 2020 फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर. I don't think Arsenal have beaten Manchester United in the league, that is 2020 से. तो there has been a long while, और वही नहीं, उससे पहले बहुत लंबा गैप था. तो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव द बेटर ऑफ आर्सेनल इन टर्म्स ऑफ ओल्ड ट्रैफर्ड. तो वो चीज याद रखिए, डिस्पाइट आर्सेनल फॉर्म. So again, people, be very careful in terms of basically predicting as well as basically, you know, going for that player in this game, because there is a rivalry. So you never know, it might heat up. Yeah. फनबाशे, एग्जैक्टली फनबाशे, मैंने ट्वीट और पोस्ट किया था इसके बारे में. थैंक्स दिव्यांशु, कैसे हो? एंड यस, बाय द वे, हम बारसा के मैच में भी आएंगे, मिलान डार्बी, एब्सोल्युटली हम आएंगे भाई, बात करनी है उसके बारे में. बट बिकॉज आई एम कवरिंग एफपीएल, बिकॉज ईपीएल रादर, बिकॉज ऑफ एफपीएल डेडलाइन. ओके, माय प्रेडिक्शन 2-0 टू चेल्सी. अनुराग बोल रहे मीनवाइल. ओके, यहाँ पर हम विलियन बी एन ऑप्शन फॉर एफपीएल, ही आल्सो टेक्स सेट पीसेस. यस, वहां पर आई थिंक स्टार्ट तो अभी नहीं करो, डोंट गेट इन विलियन राइट नाउ. लेकिन द फैक्ट इज वहां डैन जेम्स भी हैं, आ गए हैं जो, तो दे माइट गो फॉर वन और द अदर कंसीडरिंग विलियंस, यू नो, रिसेंट फिटनेस एंड फॉर्म. ओके, चेल्सी 1 वेस्ट हैम 1. मानव, कैसे हो भाई? मच लव टू यू. स्क्रैपी गेम, वही मैंने भी देखा है भाई, देयर विल बी समथिंग, थोड़ा फिजिकल गेम होगा इसमें. तो मैंने 2-2 बोला है, देयर विल बी मिस्टेक्स, आई हैव कॉल्ड इट. No, Havertz is not my starter. I'm also frustrated for Havertz, but that's not his fault. He's not a number 9. That's it. Yeah, fair enough. चेल्सी कार्लो भाई 100%, नो टू वेज अबाउट इट. मैं तो चेल्सी कार्लो दूंगा, बिकॉज दैट वाज फॉर मी ग्रेट फुटबॉल हमने खेला है, लेकिन एज अ जस्ट रिकॉर्ड देखो तो इट माइट बी मिलान के कार्लो. बट अगेन पीपल, लेट्स टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल जो है भाई, दैट इज probably arguably the game of the weekend. Let's be honest about it. Yes, Merseyside derby, you can say that. Chelsea, West Ham, Tottenham, Fulham bhi technically London derby, but Manchester United Arsenal has to be that game for me. So people, what do you think? Manchester United versus Arsenal, what's going to happen in terms of basically the fitness? I believe that Manchester United have a fit squad. I don't think है problem. Martial might not play. That is the only problem. Yes, Martial might not play. I think he has an injury. Apart from that, I think because Martial will not play, will you be tempted कि Ronaldo will start? I still doubt it. I feel that यहाँ पर Rashford might be that number 9. Yes, by the way, बोला है एरिक टेन हाग ने एंटनी के बारे में. I believe he was not first supposed to be eligible, लेकिन just in time they have registered. तो it'll be a last minute call about Anthony और Casemiro. In my opinion, दोनों बेंच से आएंगे. Yes, you heard it right, because things have been going well. So again, don't pick them. कैसेमिरो तो ऐसे भी मैं एफपीएल के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन एंटनी डोंट पिक देम. बट हाँ, द फैक्ट दैट अगर एंटनी भी नहीं शुरू करेंगे और अगर मार्शल नहीं शुरू करेंगे, what is your starting lineup for Manchester United? In my opinion, maybe just maybe Ronaldo might start this game. हाँ, he style different है in terms of what they're playing. Elanga, you have a Sancho, Rashford. I think probably नहीं यार, वही है सेम. You still have a Sancho in form, तो you'll play Sancho और Rashford up top खेलेंगे, और Bruno behind him, Eriksen, you know, beside McTominay. क्या लगता है आप लोग को? वाओ, ऑप्शन तो बाई दिया. नाइस गुड यार, मतलब गुड है. अगर अच्छा कर दिया तो यू हैव अ प्लेयर फॉर अराउंड 30 मिलियन मिडफील्डर, नॉट बैड. लेकिन आई डाउट कि आप जाएंगे, मुझे पता है आप बेलिंगम के लिए जा रहे हो नेक्स्ट ईयर. वो अलग बात है कि मिलेगा कि नहीं. सैंचो क्या खेल रहा है, बिल्कुल यार, सैंचो हैज टू बी भाई, टॉकिंग अबाउट एफपीएल टर्म्स में भाई, सैंचो इज अ गुड पिक.
सैंचो एक प्लेयर है भाई, कॉन्फिडेंस प्लेयर उसका है, चल जाता है ना तो भाई वो डायरेक्ट खेलता है, गोल्स मारता है, तो सैंचो इज अ गुड पिक फॉर एफपीएल। यस थोड़ा एक्सपेंसिव है बट आई थिंक इज अ गुड पिक। या बिल्कुल, इट बी वेरी डिफिकल्ट, 1-1 ड्रॉ, वही काफी लोग बोले हैं। रोनाल्डो इज नॉट फुली फिट बिकॉज आई सॉ हिम वेयरिंग अ नी कैप लास्ट मैच, आई डोंट नो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग। हाँ, आई थिंक एरिक टेन हाग हैज आल्सो सेड दैट ही इज नॉट देयर येट, लेकिन अगेन मे बी वही बहाना है इन टर्म्स ऑफ बेसिकली नॉट स्टार्टिंग हिम, बिकॉज वो चाहते हैं पेस ऑन द विंग्स, वो चाहते हैं क्लोजिंग अप फ्रंट, तो वहां पर मे बी अ रैशफोर्ड और अ मार्शल डज मोर इन दैट रोल, तो इसलिए दे विल कंटिन्यू, स्पेशली जब मैचेस जीतते आ रहे हैं, राइट? If they don't start Casemiro, they will lose. They need that physical element in that game. Uh, doesn't provide that muscles, yeah. Also, Rashford is trash. Should have been sold for 20 million. भाई Rashford is trash, I agree. लेकिन भाई मेरे FPL टीम में है as a differential. बेलिंगम को गए तो आर्सेनल को आर्थर को रहेंगे, ओके। मतलब यू नो व्हाट, अगर बेलिंगम मिलता है तो दैट विल बी अ प्रायोरिटी, बट हाँ दैट्स एन ऑप्शन। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं भाई जल्दी से। आई थिंक इंजर्ड थे फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर, सो आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू प्ले। आई थिंक या आई थिंक मोस्टली इज इंजर्ड, सो जिंचेंको फॉर पीपल हु हैव इट इन देयर एफपीएल टीम्स डू नॉट प्ले इन द स्टार्टिंग 11। हाँ, मे बी देयर इज अ चांस कि वो ऑफ द बेंच आ जाए तो वो और भी बुरा है तो इसलिए मैं बोलता हूँ जिंचेंको को थर्ड सब्स्टिट्यूट रखो अभी के लिए। आई डोंट सी हिम प्रोड्यूसिंग समथिंग अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड ओल्ड ट्रैफर्ड, जस्ट मी, अगर आते भी है तो, लेकिन अगेन आई डाउट दैट ही इज फिट। लेकिन ओडेगार्ड, ही हैज बीन द फॉर्म प्लेयर इन माय ओपिनियन, ठीक है, नॉट स्पोकन अबाउट इनफ। गैब्रियल जीसस की सब लोग ने कर दिया, लेकिन उनका भी एक नॉक है, बट आई थिंक ही विल स्ट्रग इट ऑफ, ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम नाउ, तो ओडेगार्ड विल स्ट्रग इट ऑफ, आई थिंक ओडेगार्ड खेलेंगे, तो ओडेगार्ड कीप हिम आई वुड से। लेकिन हाँ, पार्टे इज आउट, एल्नेनी इज आउट, and I think Arsenal ka apart from that they're good. Zinchenko, Partey and Elneny, those three are unfit, and yes, by the way रैम्सडेल का एक मसल इंजरी था, बट अगेन ही स्ट्रग इट ऑफ, नोइंग रैम्सडेल, ठीक है, तो खेलेंगे रैम्सडेल भी। तो आई बिलीव दैट आर्सेनल एट ओल्ड ट्रैफर्ड, विल दे बी एबल टू स्कोर with Alessandro Martinez in form, with Varane back in form as well. You know what? I think somebody said in chat that Casemiro अगर नहीं खेले तो it will be a problem in midfield. On the other hand, मैं बोलता हूँ this is probably a game जहां पर Arsenal's Elneny and Partey are missing, or Zinchenko might be missing. Lokonga, I think it's okay. I think I'm still going with Manchester United. वही midfield battle will probably win you the game, and I feel that Eriksen कर पाएंगे वो passes जो he always looks for. So I feel that Manchester United might get that odd extra goal, or I'm going yes for a fourth successive Manchester United win, or Arsenal to finally drop points and not just that lose. So I'm going Manchester United 2. Yes, and I'm also predicting कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ द बेंच आएंगे और स्कोर करेंगे, तो यहां पर बहुत लेफ्ट फील्ड जा रहा हूं। मैनचेस्टर यूनाइटेड 2 और आर्सेनल 1, सब लोग आप लोग डालिए अपने प्रेडिक्शंस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ओके, दिस इज काइंड ऑफ नॉट गुड पीपल, कम ऑन, इतने देर से चल रहा है भाई, लाइक कर दीजिए स्ट्रीम को, डेफिनेटली हेल्प्स, जस्ट द प्रेस ऑफ अ बटन, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट थैंक्स फॉर कमिंग ऑन। I don't think CR7 would start. MUFC will line up similar to the Liverpool game. Exactly, the game is all about the second ball. Arsenal's high line versus MUFC's counter attack. Eriksen will be the man of the match. हाँ, exactly, भाई. Manav and me think like, look like it. जैसे मैंने बोला that Eriksen will probably get that space what he generally does not get, and that is why probably I'm going with that Eriksen. That extra element with Bruno being the second striker will help. So I'm going 2-1, but Manav is going 1-all. I have okay, Rodrigo and Zinchenko, who to replace with them. Okay, by Rodrigo is a long term signing. I would say अगर Rodrigo आपके इंजर्ड है ना, और Zinchenko, let me just see quickly यहाँ पर FPL देखने दीजिए मुझे. So I'm just seeing, तो कितना आपके पास बजट कितना यार, ये बोलिए, depends on your budget. So I'm just trying to see what are the best options. तो अराउंड 6.5 is what I'm assuming आपके पास है Drain. Again, anyone else has any doubts, I can always come in between and solve that for FPL, क्योंकि डेडलाइन आने वाला है भाई in 45 minutes. तो मैं यहाँ पे if you am seeing the midfielders, and of course काफी लोग साइन भी किए गए हैं, the safest option मैं बोलूँ ना is Pascal Gross. अगर आपके पास नहीं है, Gross is the safest option. He is the guy जहाँ पर easy fixtures है, plus he's scoring goals and getting assists. ठीक है, वो एक है. Martinelli, yes, ESR is finally kind of coming back of the bench, लेकिन Martinelli I think still starts. Martinelli के साथ आप जा सकते हो. Yes, in terms of fixtures, Arsenal के इतने easy fixtures नहीं है for the next month.
So that might be the only concern for you. And I'm just seeing, looking at Leeds के fixtures. You know what? Leeds का भी player जा सकते हो. Leeds have an easy fixture list. खाली एक Manchester United बीच में, वो भी I think Manchester United not that dangerous team, at least for now, compared to जो हो सकते थे. So I think go for a Leeds player, maybe a Harrison or maybe क्या बोलते हो एरिनसन और पास्कल ग्रोस, मार्टिनेली. ये चार ऑप्शंस मैं बोल रहा हूँ आपको. अपार्ट फ्रॉम दैट न्यू साइनिंग्स में अगेन वेट एंड वॉच, आई वुड से. अगर आपके पास 8 मिलियन है, समथिंग लाइक दैट, कुलुचेस्की मैन, गो फॉर कुलुचेस्की. अगर आपके पास नहीं तो okay, with open start I will say Arsenal will beat Manchester United by 1-3 with 2 for Jesus and 1 for Martinelli. Wow. Seeing Odegaard at Arsenal, I feel so bad as a Real Madrid fan. I don't know how he didn't get you know what, Anup, ओडेगार्ड को चाहिए एक पोजीशन जहां पर ही इज हैविंग हिज ओन, दैट रियल मैड्रिड में नहीं मिलता यार. लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, दैट्स द होल रीजन. लेकिन कमिंग टू यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल, वेल दैट वुड बी अ ह्यूज टेस्ट फॉर ईटीएच. कैसेमिरो शुड स्टार्ट, या ही शुड स्टार्ट. लेकिन वो ये मेरा गट बोल रहा है, ही मे नॉट स्टार्ट. लुकिंग एट द बॉडी लैंग्वेज इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ ईटीएच, हाँ इवेंचुअली ही विल, एज विल रोनाल्डो एट सम पॉइंट. लेकिन अभी के लिए दोनों आर नॉट स्टार्टिंग. वेरी वेरी स्ट्रेंज दैट. लेकिन देखते हैं भाई, ब्रूनो एंड एंटनी शुड स्टार्ट, टू इन प्लेस ऑफ एलांगा. You know what? Elanga might start. Elanga might start again. The reason being that वो एक against a Manchester United, ठीक है, जहां पर इतना मतलब सॉरी against Arsenal, they don't have Zinchenko. Remember Arsenal, तो वहां पर Tierney might play again. He's superb on his day, लेकिन someone who's injury prone, someone who's kind of having that in the back of his mind, तो हो सकता है Elanga gets the better of him. I'm just saying. So 1-0 United win. Wow, same as me, but I'm going to 1. I hope Arsenal lose 5-8 to United with Jesus and Martinelli score. Wow, for FPL, all for FPL. I don't want to jinx. Okay, fair enough. Vipra, Arsenal fan in the house. With Ramsdale, Jesus and Elneny in the squad, I'll go for Arsenal win. Okay. Again, I doubt if Elneny is fit. I doubt if Elneny is fit. ओके, बाय वे सलीबा के बारे में बोल रहे हो तो भाई, सलीबा इज ब्रिलियंट. ही इज अ ब्रिलियंट पिक. अगर आप बाई चांस आपके पास है डिफेंडर लेने का. 6.7 मिलियन था. ओके देन, तो आई थिंक यू गॉट माय ऑप्शंस राइट. आई थिंक दोस आर माय 4-5 ऑप्शन जो मैंने बोला. उसमें से बेसिकली पास्कल ग्रोस इज द सेफेस्ट ऑप्शन अगर आपके पास नहीं है. ओके, I already have Sanchez and Dunk. Okay, don't want to triple Brighton players. Okay, fair enough. Yeah, in that case, go for a Leeds player. Go for a Leeds player. Leeds with Nonto coming in pace. You never know. He काफी सारे cutbacks हो सकते हैं और वहां पर goals मारेंगे भाई Leeds, in my opinion. Okay. Okay. I now I understood. अरे thanks. मतलब साहिब, let me know भाई. Let me see. राम, Jesus and Mohammed. मैंने तो सीरियसली लिया था, कोई नहीं. ये बिल्कुल. I got it Anup, finally. बिल्कुल. Again, people, let me know what is happening. Manchester United Arsenal. I am looking forward to the weekend यार. इतने सारे derby matches, rivalry matches है. And talk about derbies भाई, technically एक और derby है. It is Tottenham versus Fulham. और यहाँ पर Tottenham, I know they've done madness in terms of FPL terms, लेकिन in terms of game play मैं आर्ग्यू करना चाहूंगा भाई, Fulham have looked as good if not better than Tottenham at times. Yes, आप सोचोगे पागल है बंदा, लेकिन नहीं, सच में बोल रहा हूँ. in terms of game play, I think Tottenham fans खुद इतने convinced नहीं है. As much as they have been getting the results, just like a Manchester United, they still have that next couple of gears to go. और वहीं पर आई थिंक एट सम पॉइंट दे विल कम शॉर्ट. हैविंग सेड दैट, इट्स फुलम. बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस मैं देख रहा हूँ भाई, टॉटनहम ही जीतेगी ये मैच. और टॉटनहम के लिए लूकस मोरा अभी भी आउट है. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई बिलीव ब्रायन हिल इज ऑल्सो आउट, बट अगेन उनका ट्रांसफर शायद हुआ नहीं फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर. सो ही इज गोइंग टू स्टे टॉटनहम, बट आई डाउट कि वो शुरू करेंगे. सो आई थिंक टॉटनहम का फिट स्क्वाड है. दैट इज मे बी वन ऑफ द रीजंस मैं जा रहा हूँ. फुलम बाय द वे हैव मेड अ कपल ऑफ साइनिंग्स. Yes, Dan James have joined them on loan, लेकिन I doubt that he'll have such an impact to begin with. लेकिन हाँ, eventually probably होंगे. तो अभी के लिए रुकिए. Fulham की midfield is something that I like. Palhinha is someone that you can go with. He's a good choice. और who else? Mitrovic, of course भाई. अगर आपके पास close to 7 million है और आपने मित्रोविच को नहीं लिया तो आप गलती कर रहे हो. आप definitely you need to take Mitrovic by now, और I am one of them who definitely say that. Okay, people, actually, this game in Old Trafford in a different gravy at home, on home these days. Okay.
fair enough. Again, thanks for joining. Do not forget to like, share, and subscribe. We have a second channel as well for people who are new to the channel. हमारा second channel है Almighty Blues FC, which is actually a main channel, and of course this one. So please like, share, and subscribe. It's always linked in the description below. Alright, big up, big up. What's a more panic buy or loan? Casemiro, Melo, or Zakaria? By no kind of doubts it's Zakaria, because हमारा first choice नहीं था वो. Simple as that. लिवरपूल का भी आप बोल सकते हो आर्थर मेलो, बट आर्थर मेलो हैज अ लिटिल बिट ऑफ एक चीज है ना, लाइक अ तियागो का रिप्लेसमेंट. जकारिया इज अ टोटली अननोन टेरिटरी जो हम जा रहे हैं, लेकिन बिकॉज मैं देखता हूँ भाई सीरिया में देख रहा हूँ जकारिया को इतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए एज जस्ट अ प्लेयर, बिकॉज ही आल्सो स्टार्ट्स फॉर रिमेंबर ही स्टार्ट्स फॉर स्विट्जरलैंड. या सॉन इज अंडर परफॉर्मिंग यार मेरे एफपीएल में. आई एम गोइंग टू रिमूव हिम यार. आई एम गोइंग टू रिमूव हिम बेसिकली. आई एम गोइंग टू डू इन फ्यू मिनट्स, बट लेट्स सी. आजकल क्लॉप से ज्यादा हमारा असिस्ट मैनेजर पेप लाइन पे चिल्ला रहा था. Oh my god. Paulina doesn't make points. Yeah, but I think he has made points till now, from what I see. So I'm just seeing that. But again, there are very good players. Again, here we are doing FPL as well as a preview for the game. So यहाँ पर also I'm calling out dangerous players for maybe Spurs to look out for. Okay, Bhaiya, do you think Ward Prowse has good option place of Rodrigo? Word prowess, I would still not recommend. The reason only being that set pieces is brilliant, he gets you assists. लेकिन यार generally as a team ना, Southampton yes they beat Chelsea, उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ, I think that they don't have word prowess as the final man, from midfield. तो वहां पर they have basically their wing play ज़्यादा और their pace ज़्यादा that you. So that's the reason मैं बोल रहा हूँ, because there are better options. अगर आपके पास नहीं है ज़्यादा options, तब fair enough. लेकिन there are Leeds have a good run of fixtures, so why don't you pick Leeds? Brighton के players you pick, I would say that. Other players of Leeds also you can take, no? If not Rodrigo. I think Harrison is not bad. I think even Aronson is not bad. Should I go for Aronson or Harrison? Okay, यहाँ पर मैं जाऊंगा for Aronson. सच में बोलता हूँ, Aronson is that long term solution for Leeds, तो वो रहेगा ज़्यादा consistent in my opinion. Harrison has been good, लेकिन हाँ Aronson is my man. वो improve करेगा week by week, देखना आप. So come on, let's get to 100 likes, people. Let's get to 100 likes. Can Son handle this form due to fame? Well, I don't think fame is anything to do with it. Come on. I think Son is famous for a big time. It's all about basically just as in getting back to form. Or one of the reasons I've told it technically. देखिए, the way Tottenham have been playing under Conte, especially in this season, so they are depending a lot of gameplay is done on the right flank. और वहां पर you have a Kulusevski who kind of pings you the ball on the left wing, और वहां पर Son cuts in. So Son आ जाता है अंदर. वहां पर Perisic will get a lot of kind of options. Perisic is a good pick, by the way. Okay, then people let me know Tottenham Fulham predictions, score predictions. यार Tottenham Fulham मैं जा रहा हूँ Tottenham to get Fulham. यार लास्ट मैच में अनफॉर्चुनेट थी यार. They should have at least got a draw against Arsenal, नहीं? But I think I don't know, they have enough. I think they'll not be able to score. Yeah, I have a feeling Mitrovic है, but I feel that Fulham might not be able to score. Tottenham का वो ये with Conte, the structure is getting better and better week by week in terms of structure. So concede मुझे नहीं लगता they will do unless Mitrovic has his J. तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पर 2-0 to Tottenham. Yes, I've gone 2-0 for Tottenham, and Tottenham are doing brilliant यार in terms of getting results. लेकिन इस गेम में finally I believe that क्योंकि इतने लोग fit है, they might actually get back to form in terms of gameplay as well. Anthony Taylor to Spurs, here we go. Okay, one goal. Anup Gautam बोल रहे हैं 3-2 Spurs. Do you think Conte should start Richarlison because he played so much better than Son currently? I don't think so. I believe that Richarlison का impact जो है ना of the bench, that is probably working. So I feel that they should continue. या मे बी आप बोल सकते हो मिड वीक में मैच है इस बार, तो देयर माइट बी अ केस कि वो जल्दी आ जाए, नॉट कम एट द आवर मार्क, मे बी हाफ टाइम एज वेल, तो वो हो सकता है. 3-1 to Tottenham. Ankit bhaiya 2-0 Tottenham. Yeah, exactly same as me. So again, people, let's move on. A lot of games, or of course, हम बात कर चुके हैं. For people joining late, so please hit that like button. We have spoken about the Merseyside derby. We have spoken about Chelsea, West Ham. We have spoken about Manchester United, Arsenal, and we have spoken about Spurs, Fulham. So all the important matches हो गए in terms of derbies and rivalries. लेकिन Aston Villa, Man City. People, let me know.
क्या लगता है आपको? यस, हम आ रहे मिलान डार्बी एंड अदर लीग्स पर, लेकिन आई एम डूइंग ईपीएल बिकॉज ऑफ एफपीएल अगेन, डेडलाइन आधी घंटा में. एस्टन विला वर्सेस मैन सिटी. व्हाट आर यू थिंकिंग मैन? एस्टन विला, वेयर आर दे? वेयर इज दैट एस्टन विला जो मैं देख रहा था लास्ट सीजन में? कहाँ गायब हो गया यार? कहाँ? आई डोंट नो मैन. बाय द वे, उनके डिफेंडर डिएगो कार्लोस इज इंजर्ड. दैट्स अ बैड पार्ट. डेंडोंकर who has come, can he change something? By the way, he's not 100% fit, so I doubt if he'll start. So Coutinho, he has to create more and do more, in my opinion. McGinn, he's not looked that player what he was looking last season for whatever reason. By McGinn, I really rate him. Ramsey, youngster है, maybe आप बोल सकते हो at some point, होता है on off. Watkins, Ings. So will basically Gerrard be brave enough to start with both of them? I doubt it. So by FPL managers, again, be careful. I feel that he might continue with only Watkins for now and Ings of the bench. What do you think about that? Yes, I do play. Some years I've played, some years not played. So I tend to do that. So let's see. I intend to do that. मैं देखता हूँ, मैं बनाता हूँ team, और इस weekend ही hopefully if I get time I do that. Yes, by the way, talking about weekend, man, कल इंडिया पाकिस्तान भी यार, we'll try and cover that by the way. और आज प्री मैच होगा for Chelsea hopefully. Yeah, there is a chance, always there's a chance, lekin, but because we have spent so much, I think after spending so much, you have to give managers some time. So I feel that because it's the World Cup year, World Cup tak at least रहेंगे. That's my call. But even beyond, yeah, I've told it Tuchel, he'll get things right eventually once he kind of knows that what are the possibilities of इतने सारे players आ गए तो. As Villa don't have plan, they run like headless chickens. इसलिए बोल रहा हूँ ना, Watkins for them is more important than basically a fulcrum, because वहां पर क्या होता है ना, Watkins kind of wins you the balls doing that. So simple as that. लेकिन मैगगिन यार काफी काफी मैं तो सरप्राइज हूँ. सिटी वर्सेस विला, अनदर हैट्रिक कमिंग फॉर हालैंड. सिटी विल डिस्ट्रॉय विला विद अ 6-0 विक्ट्री. वाओ, 6-0 तो नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज एस्टन विला वर्सेस सिटी. इट्स एन अवे गेम एंड एस्टन विला डेस्परेट भाई टू गेट अ रिजल्ट. तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा बैटल होगा. 100% थोड़ा बैटल दिख रहा है मुझे. लेकिन अगेन वही है, लो ब्लॉक रखेंगे तो भाई, डू दे हैव द डिफेंस? नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज डिएगो कार्लोस आउट है. यस, दे हैव साइंड अदर्स, कमारा इन मिडफील्ड, बट उन्होंने इतना किया नहीं है टू बी ऑनेस्ट. एंड बाय द वे, टॉकिंग अबाउट सिटी, I believe Jack Grealish might not be 100% fit, so थोड़ा doubt है. So maybe he will not start as has been the recent week. Carrion Phillips, he is not fit either. तो क्या सेम ही लाइनअप होगी? आई थिंक प्रोबेबली फोर्डन हैज बीन गुड इन रीसेंट वीक्स. फोर्डन के साथ शुरू करेंगे, बर्नार्डो सिल्वा खेलेंगे. मारेज, आई डाउट इट यार. मारेज मैंने लिया है, बट ऑफ द बेंच ही माइट बी इफेक्टिव अगेन. गुंडोगन एंड De Bruyne, I feel that these two will play. De Bruyne, remember, he's well rested, so go for De Bruyne. अगर आपने बाई चांस अभी तक नहीं लिया और आपके पास बजट है तो De Bruyne will play, Gundogan will play, and I'm looking at maybe the defense. वहां पर I don't think they'll make any changes either because it's been going well, but yeah, Nathan Aki, I believe वो भी 100% fit नहीं है, तो he won't be back. Laporte as well, he's not going to be back until end of September. तो याद रखिए people, everyone, why Wolves are selling their assets. Cody, I think more than selling, वो freshen up कर रहे हैं. Abhishek, if you remember, they have bought Kalajdzic, correct me if I'm wrong, and they have got basically a couple of midfielders who are very good. Like, in terms of defense, I do not agree that Bolly as well as Cody should have been gotten rid of. लेकिन again वो freshen up कर रहे हैं because they are not able to create as much, in my opinion. Overall यही problem है. The problem with Coutinho is he only plays well when he's on loan. Arey, thanks Matata United, much love. Steven Gerrard next to be sacked, बोल रहे Cyan. Okay, Wolves don't play formation for Cody, Bolly, injury prone defender. Yeah, fair enough. Like, share, subscribe and enjoy. Absolutely. चलो पार, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अगेन. हमने कवर कर लिया आर्सेनल के मैच में, बट विल कम बैक टू इट. ओके, वुड यू स्टार्ट मारेज और सिल्वा? आई थिंक सिल्वा स्टार्ट्स हियर, नो टू वेज अबाउट इट. सिल्वा विल स्टार्ट. आई थिंक इट्स बिटवीन मारेज एंड फोर्डन रादर, बिकॉज मैं चाहता हूँ दैट again, Foden is someone who kind of cuts in better rather than from the left hand side versus a Silva. So I would have Silva on the left hand side and maybe have Foden cutting in from the right hand side. आप बोलिए, what formation need to play a defender? He played a whole season with back three when he played at back for all his life. Okay,
I don't know, Abhishek, for what you're saying this, but anyway, I'll come back to this. Wolves are just unlucky. They will click eventually. They don't create and finish well here. Simple as that. That is the main problem. That is the main problem. They don't score enough goals. Or Baki, they are very solid. I like Bruno Lage as a coach as well. But people, let me know. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो अगेन और नेक्स्ट कौन सा है लेट मी सी और कौन से मैचेस है भाई ब्रेंटफोर्ड लीड्स मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्विकली भाई सिटी और एस्टन विला का प्रेडिक्शन डाल दीजिए मैं यहाँ प्रेडिक्शन नहीं दिया ना मैन सिटी आई बिलीव विल विन दिस गेम फॉर श्योर यस और टॉप ऑफ द लीग जाएगी बिकॉज आर्सेनल मैंने प्रेडिक्ट किया है कि दे विल लूज द गेम रिमेंबर बट आई थिंक इट विल बी क्लोजर देन व्हाट पीपल थिंक मैं बोल रहा हूँ व्हेन आई से क्लोज फॉर मैन सिटी I am calling Aston Villa 2 goals होंगे. Yes, you heard it here. For a change, 2 goals City concede करेगी जो न्यूकासल के साथ हमने देखा था. But City will be able to score, of course, with Haaland factor being there. Mane is coming to the bench, and they have a Bernardo Silva fully focused. De Bruyne well rested. Gundogan, that midfielder leader जो चाहिए अभी after Fernandinho going. So I feel Man City will get 3 goals. So I'm saying 3-2 to Man City. थोड़ा सा लेफ्ट फील्ड जा रहा हूँ बट अगेन 3-2 is what I'm feeling यहाँ पर. Cody was midfielder turned into centre back. So it was utterly shit when Wolves played back four. Well, I don't know why we're discussing that, but I think Wolves के लिए Cody suited in the back five much more than back four. But for Everton, he is playing a bit of both. So let's see. Time will tell. Yeah, but again talking about other teams मैं देख रहा हूँ. Let's see. अब Wolves की बात कर रहे हैं ना. Wolves में देख रहा हूँ. By the way, Wolves में again, would you pick players from Wolves in this game week for as a substitute? No, yaar. Wolves they're playing Liverpool next and Man City next. So I would not recommend more Wolves players anyway. For a substitute or for a transfer in. Definitely not. हाँ, उनका I think they are well in terms of injuries. They just have Chiquinho out, I think. But otherwise they are good. तो in terms of injuries they are good. लेकिन वही जैसे मैंने बोला ना, they don't give you enough points unless you're picking a defender. और defender नहीं pick करो for Wolves because they're playing Liverpool, Man City in back-to-back weeks. Okay, 5-win for City. Haaland and Alvarez with the goals. Wow. By the way, Alvarez, he's been terrific, man. Maybe he gets a start. मैंने बोला है maybe Foden, but I think maybe Alvarez gets a start. Quite possible. Yeah, I agree, man. Adidas was absolutely class. 4-0 for City. Okay, Eze or Aronson? Actually, yeah, Eze is a good one. Let me just see. I feel that Crystal Palace ka slowly but steadily they are putting it a lot of performances with Eze. Okay. Only thing is Crystal Palace in terms of fixtures they have Manchester United and Chelsea in the coming weeks. बोल सकते हो not that threatening. लेकिन I would still मैं एजे को रेकमेंड नहीं करूंगा because has he convinced enough in terms of FPL? I don't think so. मैं जाऊंगा एरनसन के साथ. Again, अगर हाक दिया तो मुझे गाली मत देना. You know what? Fantasy is all about basically gut and basically knowing that who is basically in form, who has that pace, change of pace, something like that. जो एरनसन कर सकते हैं plus goals ला सकते हैं, assists ला सकते हैं. So I feel Aronson might be doing that because I see them scoring more goals than Crystal Palace. गोलकीपर और किलमैन या लेकिन अगेन यार सिटी के साथ है यार एक मैच मैं तो वो भी रेकमेंड नहीं करूंगा वुल्स का डेफिनेटली अभी के लिए एटलीस्ट मे बी आफ्टर 2 वीक्स या उस पर भी आएंगे एब्सोल्युटली वी हैव टू स्पीक अबाउट दैट स्टार करके रख रहा हूं भाई वी विल टेक लॉट ऑफ प्रेडिक्शंस डरेन 4-0 बोल रहे हैं इंटरेस्टिंग 3-1 ओके अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिटी सिटी गेम अवे टू एस्टन विला अल्वारेज हालैंड फोर्डन वुड बी माय फ्रंट थ्री एंड सिल्वा गुंडोगन एंड केडीबी इन मिडफील्ड वाओ that's interesting again will that be यार आप रॉड्री को नहीं स्टार्ट करो इंटरेस्टिंग दैट भाई एस्टन विला इज नॉट सो सिंपल आल्सो दे हैव अ फिजिकल मिडफील्डर we haven't scored against Betis for 5 seasons at Santiago. Wow, that's a great stat. I didn't know that. Thanks for sharing. But people, let's move on. Yes, by the way, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ मेरा टीम. I know मेरा टीम तो काफी हग रहा है in terms of FPL. Man, I don't know. People, I have transfers, and I know that there is time, right? There is time still. And yes, let's get to 150 likes, people. Let's see. Okay, ये मेरा है यार. देखिए, तो Sanchez, तो I think it's a good pick in my opinion. And I have basically 2 transfers, 2 free transfers है मेरे पास. And yes, we'll come back to other games and leagues as well. Ward. चलो, he's a substitute goalkeeper at best.
लाइक मैंने एस्टन विला सोच कर लिया था यार, लूका डीनिया ही पुट्स इन योर सेट पीसेस यार, मतलब मैं सोच कर लिया था, ये क्या किया है पता नहीं. He's been a failure for me, but again, I don't think I can substitute him. James, Van Dijk, Perisic, Kilman. हाँ, किलमैन है मेरी टीम ऑलरेडी. अभिषेक आप देखिए, ग्रोस, मैडिसन, लुइस डियास, मारेज, रैशफोर्ड, जेसूस, टोनी, केन. यू नो व्हाट, आई थिंक इट्स गुड, राइट? डू आई नीड टू मेक अ चेंज? व्हाट डू यू थिंक? मारेज ऐसे भी यार, ही कम्स ऑन द बेंच एंड हैज एन इम्पैक्ट. मे बी यार मैं मारेज को कर लूं चेंज. शुड आई चेंज मारेज? इफ आई रिमूव मारेज, मेरे पास है 8.5. तो देखते हैं भाई मिडफील्डर्स फॉर 8.5 कौन लेने वाला हूं मैं. Should I go for a totally new player? Not yet, because they may not start. 8.5 में, I think, is it time to basically go for a Zaha? Zaha has been the form player, yeah. But again, they are playing Manchester United, Chelsea. I'm just thinking, मैं किसको लूँ? People, what do you recommend? कुलुसेव्स्की, कुलुसेव्स्की को ले लेते हैं, ठीक है. तो आई एम गोइंग फॉर कुलुसेव्स्की, आई एम नॉट गोइंग फॉर ज़ाहा. नहीं, लेकिन मेरे पास पेरिसिच और केन दोनों है इस टीम में. आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर कुलुसेव्स्की. आई एम एक्चुअली गोइंग टू बी गोइंग फॉर, देखते हैं यार, इस बार ज़ाहा के लिए जाते हैं. व्हाट डू यू थिंक? ज़ाहा इज फिट एंड फिक्सचर्स इज, यार, नॉट दैट इजी, बट स्टिल आई थिंक नॉट दैट डिफिकल्ट ईदर. न्यूकासल, आई थिंक ज़ाहा ईदर वेज विल स्कोर, राइट, और कैन स्कोर. देखते हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं इन द कमेंट्स. भाई ज़ाहा को लिया है, शुड आई बेसिकली कि टेक ज़ाहा और समवन एल्स? सैंचो इन फॉर रैशफोर्ड. I think that's not a bad choice. तो देखते हैं, I'll maybe do that. And yes, people, I'm going to cover other games as well. Just give me a second, because मेरा मेरे लिए डेडलाइन खत्म हो रहा है यहाँ पर, मैंने नोटिस किया है. But anyway, I'm just going. तो I think सैंच, रैशफोर्ड भैया, लेकिन मारेज अभी शुरू नहीं कर रहे ना. Moving to back three: Cancelo, Trippier, Trent, Andreas, Salah, Andreas Pereira. Okay, interesting. Martinelli, Diaz, Jesus, Haaland. Okay, I think it looks a good team overall. Zaha against Trippier. हाँ, why not यार, why not? नहीं, चलो, let me see if I remove Rashford ना. Probably, I think Abhishek is right. I'll probably go with him. वही है, we help each other on the stream. That's what we always do. लेकिन मैं देख रहा हूँ midfielders में for 7.2 people, 7.2 के लिए should I go for a Martinelli? Should I go for a Martinelli or I know Bernardo Silva भी है, लेकिन come on, मैं वो रिस्क नहीं लेने वाला अभी के लिए. I would rather go for अरे भाई, सैंचो जस्ट मिस हो गया भाई, 7.3. सैंचो लेना था, बट कोई नहीं. आई थिंक यू आर सेइंग नहीं है, सैंचो अफोर्डेबल नहीं है यार. 7.3 हो गया ना सैंचो अभी. दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ प्रॉब्लम. तो भाई, आई विल कीप रैशफोर्ड. Rashford is still going to play, so I'm going to keep Rashford. मैं वही है, I will remove Mahrez and I'm going to take in. So I have around 8.5. 8.5 में I'm just seeing, एक सेकंड मैं देख रहा हूँ हुआ मैं ऑप्शंस में 8.5. So I think okay. What about Bowen? I know Chelsea के साथ है. Bowen hasn't been that player that he was last season. You can say that, नहीं? तो I can go for, I don't know. Not yet Anthony यार, Anthony बहुत ही जल्दी हो गया. चलो, I'm sticking to what I had picked. That's what मैं जा रहा हूँ. I think it makes sense. Probably I can go for Martinelli. Martinelli versus Zaha यार. People, Martinelli और Zaha, ये बोल दो बस मुझे. Martinelli और Zaha. Martinelli का basically they are playing Manchester United, Tottenham, Liverpool, काफी सारे मैचेस है. Zaha का भी है tough matches, but what would you say? Mitrovic, Bamford. वाओ, that'll be a good one, absolutely. और आप मेरा दूसरा टीम के बारे में बोल रहे हैं. Don't even think of picking in city winger. बिल्कुल बिल्कुल. Bowen is useless. I had him. Yeah, this season he's not been that. Martinelli, Zaha बोल रहे हैं अभिषेक. Yeah, even I feel, yeah, I think Martinelli ना eventually, I think ESR will replace him in matches, यार. Boy, that is what I'm saying. So why should I, I would think long term, and Zaha is the main guy for Crystal Palace. And Crystal Palace ज़्यादा goals करती नहीं है, लेकिन करते तो भाई Zaha does that and he gets you bonus points. तो भाई I have done. और yes, अभी के लिए free chips. Wait for one more week to play chips, I would suggest, because again new players अभी यार कौन fit होता है कौन नहीं होता है, it'll take time. Plus midweek game है तो there might be some rotation. Zaha, thanks.
भैया इज देयर एनी प्राइस फॉर, अरे बिल्कुल है यार सैफ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। बाय द वे सैफ इज नॉट जस्ट एफपीएल, बेसिकली हम वी आर ट्राइंग टू डू इवन यूसीएल फैंटेसी, और सैफ मेंबर ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, आपको बेसिकली इवन देयर इज अ चांस ऑफ बेसिकली विनिंग अ प्राइज फॉर द प्रेडिक्शन लीग अगर आप खेलो तो, एंड प्रेडिक्शन लीग भी यूसीएल के लिए करने वाले हैं हम, तो डू चेक आउट माय नो मेंबर पोस्ट एज वेल ऑन द कम्युनिटी। जाहा, हाँ मार्टिनेली, अरे अभिषेक इसलिए मुझे साहब बोला है आपने। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो मैं कैप्टन किसको कराओ कराओ भाई, केन इज प्लेइंग अगेंस्ट फुलम, जेसूस अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड टोनी अगेंस्ट लीड्स, और यू कैन से ग्रोस अगेंस्ट लेस्टर, मैडिसन अगेंस्ट ब्राइटन। आई वुड गो विद केन यार, कैप्टन कैप्टन मेरे केन होंगे इस बार, एंड या आई मेकिंग कैप्टन केन। वाइस कैप्टन होंगे मेरे, आई थिंक आई माइट जस्ट गो फॉर टोनी एज माई वाइस कैप्टन, ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। लेकिन आई एम गेटिंग जाहा टू प्ले इन द 11, सो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ गैब्रियल जेसुस को। मैन आई कैन यू बिलीव इट पीपल, मैं गैब्रियल जेसुस को 11 में नहीं रख रहा। हैव आई लॉस्ट इट और व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक आई प्रोबब्ली हैव लॉस्ट, लेकिन ही इज ऑन माय बेंच। यस, पेरिसिच, वैन डाइक एंड जेम्स। मैं दिखा देता हूँ मेरे टीम्स। यस, आप लोग भी अपना बता सकते हो बिफोर यू गो टू अदर लीग्स, लेकिन आप लोग बोलिए। वर्ल्ड कप फैंटेसी भी अभिषेक, या व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली वो भी कर लेंगे यार। ये है भाई, सैंचेज इज माय गोलकीपर, तो आई हैव टू ब्राइटन प्लेयर्स अगेंस्ट लेस्टर, देन आई हैव वन चेल्सी प्लेयर। लेस्टर के मैडिसन आई एम कीपिंग इन द टीम बिकॉज वो इज द ओनली स्पार्क फॉर लेस्टर। पेरिसिच, वैन डाइक, लुइस डियाज, रैशफोर्ड, जाहा। Okay, Rashford versus Jesus, you would say definitely I would have gone for Jesus, right? Maybe that I could have said. Yeah, probably ये कर देता हूँ मैं। या मैडिसन को करूँ बेंच? पीपल, whom should I bench? Let me know. Whom should I bench? लेकिन I think this is probably better now. Jesus is the informed player, so it'd be stupid not to play him compared to Rashford. Yes, Rashford will lead the line, लेकिन वहीं पर लगता है मुझे गोल नहीं करेंगे, तो मैंने अभी के लिए सेव कर दिया है। आप लोग क्या बोल रहे हो? एंड यस पीपल, लीग्स विल कम टू द एबीएफसी फैंटेसी लीग, और मेरी दूसरी टीम तो हग रही है। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, एंड यस बाय द वे, और कुछ डाउट्स है तो बोल दो यार, डेडलाइन अभी होने वाला है। हालैंड क्यों नहीं अंकित भैया? यार मेरे पास फंड्स नहीं थे यार, सिंपल एज दैट। आई हैव इन्वेस्टेड इन सर्टन प्लेयर्स, लेकिन इवेंचुअली आई विल गेट इन हालैंड, डोंट वरी। मैं धीरे स्लोली बाय स्टेडली आई एम डूइंग इट। व्हाई वर्जिल वैन डाइक? वर्जिल वैन डाइक इज नॉट अ बैड पिक, आई वुड से गो फॉर हिम। वर्जिल वैन डाइक अगेंस्ट एवर्टन डिफेंस, भाई सेट पीसेस में हकते हैं वो लोग, तो गो फॉर वर्जिल वैन डाइक अगर आप जा सकते हो तो। आई थिंक ही विल स्कोर यू गोल्स इन माय ओपिनियन अगेंस्ट एवर्टन, बट जनरली आल्सो वर्जिल वैन डाइक हैज नॉट बीन द प्लेयर आई नो, लेकिन यार he has that goal in him in terms of a set piece. Not having Haaland is crime. I 100% agree there. एक और है मेरे पास यार, ट्रांसफर तो है लेकिन पैसे नहीं है ना मेरे पास, क्या करें? अल्वारेज, ओके। आपके चैनल का प्राइस इन जनरल, हाँ जनरल भी है, जनरल भी होता है यार। मैंने एक्चुअली आई हैव बीन अ विनर, जस्ट टू लेट यू नो, इन द पास्ट, नॉट द फर्स्ट, बट आई हैव गॉट प्राइज। हालैंड वही है, पैसे नहीं यार। Okay, that I was committing till this game week. Now that I have got him, he'll go on rot for sure. Abhishek, exactly, man. इसीलिए मैं I'm kind of hesitant to make that big transfer, you know. लेकिन again, मैं तो यार to be honest, मैं फन के लिए खेल रहा हूँ. It's more about you guys in the FPL league. आप देख रहे हो भाई, ध्रुव कदम in the house, man. Dhruv Kadam is actually first. Is it for real? भाई ध्रुव इज अ रियल बटेड फैन, इन बिहाइंड इनका चैनल भी है, और शाउट आउट है भाई ध्रुव को, आप अगर देख रहे हो तो भाई डेफिनेटली फर्स्ट आ रहे हैं। एंड सीएफसी ब्लूज फिफ्थ, नॉट पेन इन दियास, पेन इन दियास, नाइस नाइस नेम बाय द वे। बली की सूरत, नाइस नाइस वन, बोली की सूरत। चलो चलो, और कौन है भाई? अब मैं देख रहा हूँ फेमिलियर नेम्स, वेरी वेरी वेल डन यार दीस पीपल। अद्वैत काले, ओके। उदिनाब, ओके, नाइस। पीपल, वेयर आर यू? कौन सा रैंक में? अपना रैंक बता दीजिए यार, एबीएफसी फैंटेसी लीग में क्या रैंक है फॉर पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग। मेरा रैंक तो पूछिए मत, क्योंकि यू नो डबल सेंचुरी कर दिया रैंक में। लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला यार, 2 हफ्तों में मैंने कोई ट्रांसफर नहीं किया था, नो टू इज अबाउट इट, लेकिन और हालैंड नहीं है मेरे पास, दैट्स अ क्राइम, आई अंडरस्टैंड टोटली। लेकिन मेरा दूसरा टीम भी अच्छा नहीं कर रहा है, टॉक अबाउट बोथ द टीम्स अभी के लिए। R9 प्रीतम, 74, ओके, 74 अच्छा पॉइंट्स लिया है आपने लास्ट गेम वीक,
चलो काफी लोग हैं यहाँ पर विच आई एम सीइंग। अभिषेक भाई 80th मॉनिटरिंग एफसी आपका है। ओके, नाइस नाइस। काफी अच्छे रैंक्स है यार आप लोग के मेरे सामने तो। बट अगेन let's let's skip this part। कोई नहीं कोई नहीं, विल मूव ऑन बिकॉज वही एफपीएल का डेडलाइन आ रहा था, मैं सोचा देख लेते जल्दी से। अंकित भाई, नो हालैंड नो साला, ऑलमाइटी ब्लूज मास्टर क्लास। यार साला है मेरे दूसरी टीम में यार, ये ऐसा मत करिए यार, ऐसा मत करिए। मेरे दूसरी टीम में है डेफिनेटली, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। ऑलमाइटी ब्लूज एफसी वाला टीम कौन सा है यार मेरा, वो कहाँ पर है? मैं लेट मी एक्चुअली डू दैट एज वेल बिकॉज आई हैव 10 more minutes ना। yes people will come to other leagues as well, please have patience please, thanks a lot। लेकिन यहाँ पर बिफोर द डेडलाइन लेट मी एक्चुअली मेक अ ट्रांसफर। मेरे बहाने नहीं चलेंगे और तो लेट मी एक्चुअली डू दैट। ओके, ये क्या हो गया? पासवर्ड तो नहीं चल रहा यार। हाँ, चल गया चल गया। ओके पीपल, मैं दिखाने वाला हूँ अभी आपको, ये वाला दूसरा टीम भी दिखाने वाला हूँ। लेट्स डू इट टुगेदर। और आपके भी अगर लास्ट मिनट ट्रांसफर है तो भाई राइट नाउ इज द टाइम टू एक्चुअली मेक दैट एवरीवन। एंड यस अगेन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलान डाबी यार काफी बात करनी है अपने को, रियल मैड्रिड बेटिस बार्सिलोना सेविया, वी कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल। ठीक है, ये आ गए भाई अपन। यार 2 फ्री ट्रांसफर है यहाँ पर भी मेरे पास। तो एलिसन मेरे रहेंगे इन गोल। यस इट्स अगेंस्ट एवर्टन बट दे डोंट स्कोर इनफ गोल्स। एलिसन मेरे रहेंगे इन गोल। वेल्टमैन, द रीजन आई पिक्ड इज अगेंस्ट ब्राइटन हैव इजी फिक्सचर्स, और ये एक फुल बैक है, विंग बैक है, तो करते हैं भाई, पॉसिबिलिटी है फॉर एन असिस्ट। जेम्स जस्टिन ओनली रीजन इज बिकॉज असिस्ट का पॉसिबिलिटी और चीप थे मेरे लिए। वॉकर काइंड ऑफ कंसिस्टेंट, रिपेयर कंसिस्टेंट। एथ नूरी, ये प्रॉब्लम है मेरे लिए, एथ नूरी हैज नॉट बीन स्टार्टिंग गेम्स, तो उनको मैं निकालूंगा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है ज्यादा। साका, जेनसन को मैंने लास्ट वीक लिया था तो मैंने बाहर नहीं करना है भाई। सॉन, सॉन इज माय इश्यू, लिंगार्ड इज माय इश्यू। तो लिंगार्ड को निकालेंगे भाई, एथनोरी को रहने देते हैं, लिंगार्ड को डेफिनेटली निकालेंगे। और वॉटकिंस, टोनी और बैमफोर्ड, बैमफोर्ड फिट हो गए तो ही स्टार्ट प्रॉब्ली, लीड विल स्कोर यू गोल, सो दैट्स द ओनली रीजन। 5.9 में मुझे चाहिए एक मिडफील्डर। पीपल व्हाट डू यू रेकमेंड? मिडफील्डर्स में जाते हैं 5.9 ना भाई। पास्कल ग्रोस दोनों ही टीम में ले लूं क्या? इजी ऑप्शन है और बहुत सिमिलर होगी दोनों टीम। और मैकएलिस्टर के साथ जाऊं? आई थिंक पास्कल ग्रोस इज बेटर देन मैकएलिस्टर, इजंट ही? लेकिन मैकएलिस्टर खेलते पूरा 90 मिनट भी। काफी सारे ब्राइटन प्लेयर्स ले लिया यार मैंने, लेकिन ब्राइटन के इसमें खाली एक है, तो आई थिंक दैट इज नॉट अ बैड चॉइस। थोड़ा लेफ्ट फील्ड जाऊं मैं? मैकएलिस्टर इज बीन पिक्ड ओनली बाय 1.6, आई नो खाली डिफरेंशियली कर रहा हूं मैं। 25% पास्कल ग्रोस लिए, देखते हैं आप लोग क्या बोल रहे हो। ओके, started Nico Williams, a good move. Yeah, it's actually a definitely एक लिया है चांस आपने, बट आई थिंक निको विलियम्स, आपने देखा है भाई नॉटिंघम के अच्छे फिक्सचर्स और ही इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ चांसेस, प्लस द फैक्ट दैट यू नो he can get you an assist, so I think it's a decent move, लेकिन I would still keep Gross has been more consistent in my opinion in terms of scoring points. Kukurea or Dunk to be on the bench? Okay. You know what? I would actually अभी के लिए I would keep Kukurea on the bench because हम concede कर रहे हैं goals. यहाँ पर देखते हैं माय सेकंड टीम, डंक, ट्रिपियर, कैंसेलो, कुलुसेस्की, साला, मार्टिनेली, टोनी, जेसूस, हालैंड। वन आई नीड अ मिडफील्डर, बजट 6.4। मुझे भी चाहिए यार, मुझे भी चाहिए, मैं भी सेम हूँ। तो अभी यार देखिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पास्कल ग्रोस वाज एन ऑप्शन, देन हु एल्स इज एन ऑप्शन यार? मैं देख रहा हूँ मैकालिस्टर, यार मैकालिस्टर को ले लूं, क्या बोलते हो? आई नो काफी पॉइंट नहीं स्कोर कर रहे, लेकिन आई थिंक मैकालिस्टर कैन गेट देयर मोर। आई नो विंग बैक खेल रहे हैं, दैट माइट बी एन इश्यू, मे बी दैट्स व्हाई इतना नहीं करते व्हेन दे गो 5 विद द बैक। Nottingham kept clean sheet against West Ham. Bournemouth would be easy pick. Yeah, assist with clean sheet would be gold. Yeah, it will be. लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ यार, गोल्स करेगा पास्कल ग्रोस, मैं इतना बोल सकता हूँ। आपको क्या लगता है आप लोग को? लेकिन मेरे लिए रिकमेंडेशन खुद नहीं आ रहे, मैं खुद ही ले लेता हूँ भाई, कोई नहीं। एजे नहीं यार, एजे नहीं। आई पिक्ड वहां पर जहा। पीपल, गॉर्डन। शुड आई गो फॉर गॉर्डन? क्या लगता है? नहीं, गॉर्डन है इतने भी अच्छे नहीं यार, कम ऑन। यू नो व्हाट, आई एम गोइंग सेफ यार, आई एम गोइंग दोनों ही टीम्स में पास्कल ग्रोस। थोड़ा सा ज्यादा सिमिलर हो गया दोनों टीम्स में, लेकिन आई थिंक मेरा कॉमन एलिमेंट है टोनी और पास्कल ग्रोस, मेरे कॉमन एलिमेंट है। इट्स ओके, आई थिंक चलता है। सो आई एम जस्ट अबाउट गोइंग विद पास्कल ग्रोस बिकॉज ये थोड़े कंसिस्टेंट स्कोरर है, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग विद।
Why Bamford? Sell him before you take. यार रोड्रिगो नहीं है, याद रखे डेरेन. रोड्रिगो is injured. Bamford will play और लीड स्कोर करेगी. Bamford will come back in my opinion. Gordon must if not goal he'll assist. यार पता नहीं. I don't see Everton getting a lot of points यार. Simple. Fornals नहीं, again he's not been that player जो थे last season अभी तक. So on form मैं पिक नहीं कर रहा हूँ भाई Fornals को. That's the only thing मैं कर रहा हूँ. लेकिन Bamford, अगर मैं बाई चांस Bamford को हटाता हूँ ना, I don't think मेरे पास इतने पैसे थे ना. That's the only reason. Let me actually go back. I know literally 7 minutes left, people. 7 minutes left, right? Correct me if I'm wrong. लेकिन हाँ यार, या 7 minutes left, right? Okay, चलो यहाँ पर आई एम जस्ट गोइंग. लेट्स सी, अगर मैं Bamford को हटाता हूँ, यार क्या कर रहा हूँ मैं, Bamford को हटाता हूँ तो मेरे पास 7.4 ही बचते हैं ना. तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट. 7.4 में स्ट्राइकर कौन लोगे आप? मित्रोविच. मित्रोविच ले ले स्पर्स के साथ. ले लेते, मित्रोविच को ले लेते. चलो आई वोंट गो सेम, आई विल गो लिटिल डिफरेंट. मित्रोविच को ले लिया, ठीक है. और भी ऑप्शंस थे मेरे पास, बट मित्रोविच इज प्रॉब्ली द बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर. सब लोग क्या बोल रहे हैं? आई हैव टेकन मित्रोविच, पीपल. ऑलमाइटी चॉइस, कम ऑन, लेट्स गो विद मित्रोविच. आई मेड इट. यस, आई मेड इट. तो लिंगार्ड भाई अभी तक अटके हुए हैं मेरे लिए, लेकिन शुड आई मेक वन मोर ट्रांसफर? शुड आई मेक वन मोर ट्रांसफर? कर लेते हैं भाई, क्या ही तो याद रखेंगे आप लोग. 6.4 है मेरे पास पैसे. 6.4 में मैं किसको ले सकता हूँ? 6.4 में डू हैव टाइम? आई थिंक जस्ट अबाउट. ओके, यू नो व्हाट, हैरिसन. आई थिंक आई माइट पिक हैरिसन यहाँ पर. हैरिसन इज नॉट अ बैड चॉइस इन माय ओपिनियन. लेट्स गो फॉर हैरिसन. आई थिंक फिक्सचर्स भी ठीक है. आई नो मैंने खुद बोला था हैरिसन, लेकिन वो डिफरेंशियल के लिए था. मैंने काफी ले लिए डिफरेंशियल्स में. और शुड आई गो फॉर एंड्रियास पेरेरा? लिंगार्ड मैं शुरू में लिया था. आई थॉट दैट विल प्रॉब्ली प्ले. 6.4 में आई एम गोइंग फॉर हैरिसन, पीपल. मैं जा रहा हूँ, ठीक है. आई एम गोइंग फॉर हैरिसन. विश मी ऑल द बेस्ट. और यहाँ पर ऐसे भी लीड्स का मेरे पास प्लेयर नहीं है ना, तो मैं ले रहा हूँ भाई हैरिसन. यस, बैमफोर्ड हटा के मैंने हैरिसन को ले लिया है. कुलुचेव्स्की नहीं यार, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ ना. 8.2 है. आई डोंट थिंक आई कैन अफोर्ड हिम. दैट्स द थिंग, आई डोंट हैव इनफ मनी. तो यस पीपल, आई एम गोइंग विद बोथ द ट्रांसफर्स. भाई साहब कर दिया मैंने कर दिया है. बेंच के लिए इस बार कैप्टन मैं रख रहा हूँ साका विल रिमेन एज कैप्टन. वॉटकिंस को नहीं लेकर आई थिंक आई प्रॉब्ली हैव वन सेकेंड, आई हैव मित्रोविच in the team. Trippier against Crystal Palace is also a must. You can say that. I would rather not have Justin. By Alisson, Trippier, Weltman, Walker. Is it good? Jensen, Salah, Saka, Harrison, Son. Yeah, I think it's looking good. Captain, I think I'm going with Salah. People, what do you think? Rate करिए मेरा थोड़ा ऑर्डर चेंज कर देता हूँ. वॉटकिंस को यहाँ डाल देते हैं, ठीक है. Let me know how do you rate this team. And yes, I'm coming to your comments now. Okay, go for Tony this game week on me. Oh wow, captain, I doubt it. Again, team में तो है, लेकिन again, yes people. So thanks for waiting. By the way, a lot of matches और हम EPL का discussion कर लिए. Let's move on quickly because Milan derby भाई 1.5 घंटे हो गए हमने मिलान डार्बी के बारे में बात नहीं किया. क्या बोलोगे? Me being a Milan supporter as well. But yes, the fact is AC Milan or Inter Milan, trust me, this is one to watch out for because last season क्या हुआ था? हमने जीता था against Inter Milan. We won the Scudetto. लेकिन in the Coppa Italia, I think it was, if I'm not wrong, semi-finals में Inter Milan eliminated AC Milan. And technically, I know San Siro में ही है, but technically last 3 या 4 games से whenever we have played at San Siro as the home team, we have not got the victory against Inter Milan. We have done very badly. So that is something to be noting. I don't know. लेकिन in terms of basically just एक होता है ना, in terms of the team, in terms of what you make out of this particular squad, मुझे लगता है मिलान में enough characters है to get over Inter Milan, especially the fact that Giroud is there. Absolutely, Giroud. Yes, last match में he didn't do so well. You can argue that.
Rebic is not 100% fit, so and Zlatan is out for long term. So definitely यहाँ पर Giroud is going to start. Zlatan, he would have loved to start this game, especially Zlatan और Lukaku के बीच में जो हुआ था, you remember everyone, that was something, But anyway, दोनों ही नहीं fit है. Lukaku is not fit as well as Zlatan, exactly. Lukaku is injured, I feel bad. I don't know about that, लेकिन हाँ, Lautaro is my man, बोल रहे Derin. Lautaro fox in the box रहे हैं इस season for Inter Milan, but I'm saying, the fact that transfer window चल रहा था, Rafael Leo wasn't 100% sure. Hopefully he'll get the form of last season, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ maybe वही होगा X factor इसमें. लेकिन like I said, recent games may it has been not great for Milan. It has been slightly better for Inter Milan. So on form you would say it is probably Inter Milan, लेकिन I would still believe that Rafael Leao अभी ज़्यादा openly खेलेंगे compared to what he was when the transfer window was open. And Mike Maignan यार काफी अच्छा penalty saver है, मतलब I hope that it doesn't get to that. लेकिन definitely I can see us conceding a goal. I can see us conceding a goal because हमारे जो backline है, as much as you would say that yes, we are having players from a long time. लेकिन remember, Florenzi has got an injury. वहाँ पर we also need to have Calabria probably back. Dest, he's not fit enough to start in my opinion. But because of the fact that we have a Theo Hernandez, running down the left wing, like Alonso says as well, I feel that वहाँ पर Dumfries versus Theo will be a great battle. और मुझे लगता है Dumfries might just be able to get in one of those crosses. But talking about Inter Milan, Mkhitaryan is not fit as well. Still they have enough in midfield. मेरे ख्याल से उनका midfield है Brozovic, Çalhanoğlu और Barella, which is kind of fixed. तो वहाँ पर in midfield also it will be a battle. Probably I'm hoping Tonali starts this game along with maybe Benacer. Benacer is someone that I like. मैंने काफी दफा बोला है. Right side में Charles Di Ketelaere is good. And Inter Milan का left back has been under question. Di Marco खेल रहा है अभी back five में, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए. तो वहां पर होपफुली चार्ल्स डी केटलियर शोज इज एक प्रॉपर एबिलिटी जो कर सकते हैं. या थियो हर्नांडेज वर्सेस डम्फ्रीज विल बी ब्रिलियंट टू वॉच, एंड चार्ल्स डी केटलियर वर्सेस डिमार्को, और वो भी अच्छा रहेगा इन माय ओपिनियन. आई एम होपिंग दैट चार्ल्स डी केटलियर विल गेट द बेटर ऑफ हिम. हाँ, हो सकता है कि मेसायस विल प्ले एंड दे माइट गो डबल ऑन द राइट हैंड साइड. थोड़ा सा ज्यादा खेलेंगे विद इंटर मिलान का लेफ्ट विंग नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ विल बी एबल टू गेट गोल और टू. और मैं जा रहा हूँ व्हाट, आई गो फॉर 1-1 ड्रॉ यार. 1-1 ड्रॉ जाता हूँ, बट देयर विल बी समथिंग इन दिस गेम. प्रॉपर मैच रहेगा इन टर्म्स ऑफ डार्बी, सो वॉच आउट फॉर दिस गेम. एंड ऑफ कोर्स इंटर मिलान के लिए बहुत ही बड़ा विन था ट्रांसफर मार्केट में, एक स्क्रीनियर नॉट गोइंग आउट, तो दैट विल बी अ ह्यूज विन फॉर इंटर मिलान. आप लोग क्या बोल रहे हो? एसी मिलान से इंटर मिलान, द सैन सीरो, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? आई एम गोइंग 1-1, बट अ वेरी वेरी वॉचेबल 1-1 इन माय ओपिनियन. चेक डीएम बोल रहे हैं डरेन, क्या हो गया भाई, क्या हो गया ऐसा? ओके, लेट मी सी. ओके, डरेन ने कुछ भेजा भाई. ओके, दैट्स ब्रिलियंट यार डरेन, गुड न्यूज, ब्रिलियंट न्यूज इन फैक्ट यार, बहुत ही अच्छा न्यूज है. थैंक्स डरेन. यस, अगेन मैंने ट्वीट किया था इसके बारे में कल ही, एंड आई नो दैट pretty much sure it was expected, and this is for all. Okay, I think AC Milan will win. Wish AC Milan wins again. Wish है, लेकिन वो ये they're not looking so fluent अभी तक, so that's the only reason I'm going for it. Or of course that midfield of Inter Milan is quite good. Okay, or again they're not scoring enough goals now, both the teams, so that's the only reason मैं जा रहा हूँ 1-1 draw. Bhai, this is what it is. Reece James has agreed as per Simon Johnson of Athletic terms with Chelsea over a long-term contract. He will become the highest paid defender in the club's history. Wow. What a news, man. What a news. This is something that I've been waiting for. And of course, opposition fans have also been waiting for, because उनको चाहिए था Reece James. Especially I know that Barcelona as well as Real Madrid भाई पूछ रहे थे Reece James को काफी दफा से. आप लोग बोलिए, what do you think about that? Not just that, Man City भी after Walker maybe वो सोच रहे थे, what about that? But Reece James getting this, man, this is like awesome, man. You know what? It feels like a victory for Chelsea, man. अगर it's formal as well. I hope it becomes official very soon. So भाई Chelsea, आपने घबराना नहीं है ना, रीस जेम्स है भाई, टेंशन नहीं है, रीस जेम्स है. इट इज ओनली आउटलेट एट टाइम्स. आई होप दैट डजंट बिकम थिंग ऑफ द फ्यूचर एज वेल, लेकिन होपफुली यार ही डज इट एब्सोल्युटली, बिकॉज़ आई हेट इंटर फॉर लुकाकू. या आई सपोर्ट मिलान एज वेल, लेकिन
the fact is you have to see, bhai, by the way, Dzeko has not looked that bad after coming on. Rotaro hai, unke ek danger man hai from midfield. They have shot takers in Barella, so you never know. I can see one goal coming in. Çalhanoğlu takes good set pieces. Get in absolutely, Abhishek, bilkul, bilkul, bhai. And again, people remember, it's not just this. There are other games as well इस weekend में. तो I think some interesting games है. Serie A में भी है एक और interesting game, and that is obviously Fiorentina versus Juventus. काफी अच्छा गेम है. Lazio versus Napoli. So don't miss यार. आज ही है इनफैक्ट. यार ये क्या हो रहा है? एक तो शेड्यूलिंग में आई डोंट अग्री यार. पता नहीं यार, ये ईपीएल हो गया, सेरिया हो गया, सब साथ में सारे सब मैचेस हो जाते हैं यार. एटलीस्ट कोविड समय में आई नो आई वोंट प्ले कोविड, लेकिन कोविड समय में you kind of had spaced matches ना, इतने सारे मैचेस फॉर टेलीवाइज्ड कंटेंट वो करते थे. अभी पता नहीं साथ में इतने सारे मैचेस होते हैं. आज ना 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 5 मैचेस है ईपीएल में अलोन. इमेजिन दैट. क्या है वो भाई, 5 मैचेस. उसमें आई थिंक चेल्सी का मैच तो है ही, टॉटनहम का मैच भी है, और आई थिंक कपल ऑफ अदर मैचेस. मैन, टू मच. और अराउंड द सेम टाइम फ्योरेंटीना यूवेंटस है, और उसके बाद लाजियो नापोली है, नहीं एक्चुअली एसी मिलान इंटर मिलान है, फिर लाजियो नापोली है. तो आई डोंट नो मैन, आई ट्राई एंड वॉच एसी मिलान इंटर मिलान. आप लोग बोलिए, डू यू वांट टू वॉच अलोंग? लेट मी ट्राई एंड डू एटलीस्ट अ प्री मैच फॉर चेल्सी. वो तो करने वाले ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, बट लेट मी सी अगर वो करे कि नहीं. लेकिन लालिगा में यार, लालिगा में लेट्स हेड टू लालिगा क्विकली मैन. कम ऑन, वी हैव लालिगा फैंस आल्सो वेटिंग for long, so thanks a lot, bhai. Alonso and Bellerin both coming for just 1 year contract indicates that Barca will go for 2 proper fullbacks next window. Wish RJ was available, but that's okay. Maybe Hakimi or Trent. Oh wow, Trent को ले लो भाई, कोई नहीं. COVID football, wow, it was fun yeah to watch. Exactly, it was definitely fun to watch. लेकिन again, people, भाई ला लीगा में which is that fixture जो आप लोग देख रहे हो भाई, Real Madrid Betis will be a more interesting game than Sevilla Barcelona. I feel that Sevilla Barcelona might just be that. I know Sevilla काफी weak हो गई है, but I still feel that Sevilla na, against big teams they are still there, especially with the manager no Lopetegui. But I think यहाँ पर only issue being that Sevilla का जो डिफेंस है, will they be able to keep that Barca attack? Absolutely not. और इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पर. आप लोग बोलिए what is the score line? Yes, with midweek games I can see Barcelona maybe rotating a little bit. मतलब I can maybe see, I don't know, Ferran Torres शुरू करेंगे गेम. क्या बोलते हैं दिव्यांशु? ऑल द बारसा फैंस स्पेशली, Ferran Torres probably will start this game, I feel. और मिडफील्ड में I think there's no need to rest really, young legs है. And up sorry, defense में I think I go with Kunde, Araujo, Eric Garcia and Balde. Will that be your starting lineup in the defense? कॉफी और टी भाई, डिलीट बोथ. मैं दोनों ही बहुत कम पीता हूँ, टू बी ऑनेस्ट. I think Barca will win 3-0 or 3-1 against Sevilla, given the poor form of Sevilla. लेकिन वही है ना, Sevilla for big games you can still not take them easy, but हाँ, they'll easily win. I feel they'll still feel, मतलब Sevilla एक गोल तो मारेगी यार. थोड़ा रोटेशन होगा बारसा का, तो I feel एक गोल मारेगी, लेकिन बारसा definitely 3-1. I'll go with 3-1 as well, दिव्यांशु. Yeah, as in वही डिफेंस ऑफ सेविया इज लाइक हॉरिबल मैन. क्या बोलेंगे? ओके, कुंडे, अराहो, क्रिस्टियनसन, बाल्डे. ओके, क्रिस्टियनसन का जा रहा है. मैं एरिक गार्सिया जा रहा था अगेंस्ट सेविया, बिकॉज अगेन रिमेंबर सेविया हैव लॉस्ट ओकैम्पोस यार, वेरी बिग लॉस फ्रॉम देम. As much as आप बोलोगे डिफेंस इज मिसिंग, Ocampos is a huge loss in my opinion. And yes, by the way, attack में they have a Lamela यार. If you remember Lamela, people from previous days, so Lamela might just play, but again, will they be able to get I don't know, Dolberg? I don't think he's eligible, is he? Dolberg है, अच्छे साइनिंग है in my opinion, लेकिन Ocampos को रिप्लेस करना इजी नहीं रहेगा. इसको I don't think so. He'll start. Isco will probably come on the bench. But again, despite that, मैं जा रहा हूँ 3-1. Ocampos leaving a big minus. बिल्कुल. Absolutely. But people, what about Real Madrid यार? By the way, एक chat किसी ने share किया था भाई. Big up to the chat. कि भाई Real Madrid has not scored against Betis, I think at home for a long while. Is that for real? I don't know. Let me just check it up. लेकिन in terms of form, let's get it right. By Real Madrid look the form team. Definitely they look like a form team. Yes, अभी भी इतना फ्लुएंट नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन आफ्टर कैसिमिरो गोइंग, जो चौमिनी ने किया है मिडफील्ड में, आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. हाँ, आई एम माई सेल्फ रेटेड चौमिनी, वांटेड हिम एट चेल्सी, लेकिन मुझे लग रहा था भाई
गलती करी रियल मैड्रिड by letting Casemiro go. But in my opinion, यार Chouamani will be able to do it against Real Betis. भाई बेटिस के पास भी अच्छे प्लेयर्स है. अगेन रोड्रिगेज इन मिडफील्ड इज समवन दैट आप जानते हो कैन बी दैट प्लेयर जो कंट्रोल करे. समटाइम्स ही कैन बी दैट गाय. नाबिल फकीर, आई थिंक ही इज ऑलवेज अ डेंजर प्लेयर. बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर गुड यार. आई डोंट थिंक रियल मैड्रिड कंसीड करेगी. और रियल मैड्रिड के लिए क्या आपके लिए विच इज दैट फर्स्ट चॉइस back four for you considering midweek game है in Champions League. I feel that Real Madrid 2-0 बोल रहे आयुष. ओके थैंक्स आयुष. आप कहाँ थे भाई? हम मैनचेस्टर में आर्सेनल बात किए थे. आई थिंक प्रॉब्ली यू वेंट अवे फॉर सम टाइम. कोई नहीं. आई थिंक मैन यूनाइटेड विल ब्रेक द अनडिफीटेड स्ट्रीक ऑफ आर्सेनल एंड ग्रैब. आई एग्री देयर. नॉट दैट आई वांटेड बट मुझे भी वो लगता है इसलिए मैंने प्रेडिक्ट किया वैसे ही. रीच जेम्स साइन न्यू कॉन्ट्रैक्ट. बिल्कुल गौरव मैंने दिखाया भाई जस्ट फ्यू मिनट्स अगो. आई शोड दैट ऑन स्क्रीन एंड थैंक्स अ लॉट. अगेन लाइक करना मत भूलना यार. और बाय द वे यस पीपल शाउट आउट है भाई. अगेन 6:15 हम लाइव है. याद रखा 6:15 हम लाइव है ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी एज वेल. रूडिगर वर्सेस फेकीर, रेड कार्ड फॉर श्योर इन दिस फिक्सचर. वो इंटरेस्टिंग रहेगा. बट विल रूडिगर स्टार्ट? आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट मैच वो शुरू किए थे. तो इन माय ओपिनियन रूडिगर माइट जस्ट बी कमिंग ऑन द बेंच. मिलिटाओ और अलाबा के साथ जाएंगे और मेंडी जाएंगे लेफ्ट बैक इस गेम के लिए मेरे लिए. अरे नो प्रॉब्लम यार आयुष. मच लव. No, let's be honest, we neutrals feel bored apart from El Clasico. Actually, I would not say totally bored, Darren. मेरा reason, only reason is maybe one reason. मैं बोल रहा हूँ कि I am not become a La Liga stan ना. मतलब मैं fan तो definitely हूँ लेकिन stan नहीं हुआ because La Liga matches come really late in the night. The peak matches जो अच्छे top clubs के matches होते हैं. That is one reason maybe when it comes to Indian standard time. वो थोड़ा सा होता है और वो basically with entire day आप premiership देखते हो, before that content create करते हो. मैं as a content creator for me it becomes too tiring, so I don't kind of focus as closely as what probably I should have. So वही मैं बोलूंगा. लेकिन let me tell you, Real Betis है, Real Sociedad हाँ after Isaac you not say, but again Real Sociedad, Real Betis, Villarreal, Sevilla on their day अच्छा मैच दे सकती है. Let's be honest about it. Valencia on their day खाली हाँ, but generally I hear what he's saying. Chelsea watch along recently. Gaurav, it's not an intentful कि बंद करूंगा लेकिन I don't know आप गौरव इतना रेगुलरली देख रहे हो आजकल लेकिन the fact is I was actually unwell during the start of the season, so I thought I was feeling putting too much pressure on myself in terms of creating content. और क्या होता है ना, I was not producing shorter videos and stuff like that. जो I was feeling that जो कंटेंट इन द ट्रू सेंस है आई वाज नॉट एबल टू गिव टाइम इनफ और आई वाज नॉट वेल एज वेल. तो थोड़ा सा एक ब्रेक ले लिया था फॉर अ कपल ऑफ वीक्स. लेकिन आई एम डूइंग प्री मैच टॉक्स यार. हम पूरा 1 घंटा बात करते हैं, 1.25 घंटा बात करते हैं बिफोर एवरी चेल्सी मैच. सो प्लीज जॉइन अस. हाँ, वॉच अलोंग्स अगेन आई हैव डिस्कस्ड विद बाबा एज वेल. द आइडिया इज लाइक एट सम पॉइंट इन टाइम as football fans you need a short break from watch along. Just get in the zone, earphone के साथ सुनता हो with volume just to get that wow वाला factor. अगेन ट्रांसफर विंडो चल रहा था, चेल्सी का अच्छा टाइम नहीं चल रहा था. इट ऑल एड्स अप टू इट. लेकिन डेफिनेटली आई इंटेंड टू डू यार. आई इंटेंड टू डू बेसिकली प्री मैच हो गया, पोस्ट मैच हो गया, वॉच अलोंग्स हो गया, सब चीज आई इंटेंड टू डू. प्री मैच और पोस्ट मैच रिव्यूज तो एनीवे यू आर गेटिंग इट, ठीक है. और वॉच अलोंग्स इफ आई डोंट डू इट आई विल ट्राई एंड जॉइन अदर कंटेंट क्रिएटर्स डेफिनेटली यार. लेकिन हम करेंगे भी, व्हाई नॉट. Okay, I don't know why I feel West Ham would win today because we let team win. They are not in form. Wow. I hope not, yaar. I hope not, Gaurav. I hope not. I have called it a draw. भाई loss हुआ तो man totally in the mud यार. मैं वही बोल रहा हूँ ना, till the time Aubameyang and maybe a Fofana is 100% fit, हमें चाहिए to get some points on the board. Simple as that. Last year, La Liga was very competitive with many top teams fighting for top four. I will never say La Liga is boring. Yeah, it was, I think, till the very last month, it was going on. No? Atletico Madrid, I forgot Atletico Madrid, by the way. Atletico Madrid, and of course, we didn't talk about Atletico Madrid, Valencia, Villarreal, I think Sevilla, Barcelona. Last season, Sevilla, काफी impressive थी, especially in the first half of the season. Valencia sold Soler, yeah, I think that, especially Soler, ना, मुझे लग रहा है. Absolutely a big miss. Chelsea should play Broya, striker and Cayenne 10 role. Yeah, I think number 8 मैं जाना चाहूंगा with a 4-3-3, but जो Tuchel जाएंगे वो होगा 3 the back in my opinion. और वहां पर will Kai be able to play that wide forward role? I doubt it. Let's see. 2017 के बाद स्कोर नहीं किया. Wow, that's very very interesting stat, Sahaj. Thanks for that again. People, come on, let's get the likes in here. Like button है, let's get that in absolutely.
I won't get any position as long as he's the bench. Wow, man. Wow, that's like very strong. But I think you have a point. But I won't disagree there totally in terms of form. Yeah, at home, exactly at home. But कोई नहीं यार, मतलब again we have discussed a lot. You can put in your predictions. Real Madrid, Real Betis. I still feel that Real Madrid PL देगी Real Betis को, despite there being a midweek fixture. Or I'm hoping that basically in course of time they don't miss that backup striker Real Madrid. So maybe, just maybe, they'll get early goals and rest Benzema थोड़ा सा. But I'm calling it Real Madrid. चलो मैं एक गोल देता हूँ बेटिस को, यहाँ पर दे देते रियल मैड्रिड 4 रियल बेटिस 1. फाइनली मार देगी यार. रियल बेटिस के साथ की नहीं है तो आज रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा. क्या बोलते हो? माउंट और काई हैव टू बी ड्रॉप्ड फॉर फ्यू गेम्स, हैवंट प्रोड्यूस्ड एनीथिंग. लेकिन गौरव किसको खिलाओगे आप? जियेश, आप बोलिए. दैट इज द ओनली क्वेश्चन आई हैव. पुलिसिक, नीदर हैव बीन इन गुड फॉर्म. हाँ, जियेश को इन द राइट पोजीशन ट्राई नहीं किया गया है, पुलिसिक को भी, लेकिन नीदर हैव लुक कन्विंसिंग और कॉन्फिडेंट. हाँ, इवेंचुअली ओबामेयांग विल कम गौरव, लेकिन वही अभी फिट नहीं है ना, जॉ इंजरी है. बाय आर्सेनल गोलकीपर अनफिट फॉर द यूनाइटेड गेम. यस, देयर इज अ चांस दैट ही माइट बी अनफिट, लेकिन नोइंग राम्सडेल ही विल श्रग इट ऑफ इन माय ओपिनियन. ये मैं बोल रहा हूँ, सिंपल एज दैट. लेकिन यस पीपल, अगेन मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ if I missed any other fixtures. I think we have covered a couple of interesting fixtures in La Liga. Atletico, by the way, are playing Real Sociedad. That is also an interesting fixture. It's an away game भाई. Atletico काफी हग रही है. What about that भाई? Atletico, will they be able to get a win against Real Sociedad? I feel that the Atletico will continue to hugify because again midweek है, तो that is the only reason मैं बोल रहा हूँ Real Sociedad might get a draw against Atletico. Let me know in the chat people. लेकिन apart from that I think we have covered most of the things, right? I don't think Liga में कुछ है interesting to be discussed really as much as Bundesliga आप बोलोगे. Come on. Yes, Leipzig against Frankfurt away, it can be interesting, but I'm still calling a Leipzig victory. What do you think? Gallagher and Mount Road. Okay, interesting. Ziyech against physical West Ham. By the way, he has done well. Ironically, he has done well against a lot of physical teams. Well, problem is that Ziyech needs a partner at the far post to be understanding his passes to make those runs. वो है नहीं है. वो Pulisic is that guy. He'll not play. So Sterling, he's not got that chemistry with Ziyech. But something was building last match में. तो you can say that अगर खेलते हैं Sterling और Ziyech just behind Broja, then maybe I'll play Ziyech as that more like an inside forward. लेकिन अगर wide खेलते हैं तो I don't see Pulisic starting, so that's why मैं Ziyech को student नहीं करूँगा. Okay, would you compare ISL to any second tier or third tier European league? Yeah, why not? Why not, yaar? Matlab ISL can get there. Right now, it'll be too early. But I feel that again, I don't watch second tier or third tier European league week in, week out. It'll be wrong of me to say that, and same with ISL. I watch only the big matches. क्योंकि of the time, इतना content create करते इतना time नहीं मिलता, लेकिन I would wish to watch every game. देखिए यार, ISL in my opinion will get there. We need the backing definitely, लेकिन we'll get there. Maybe I can argue that maybe Eredivisie level हो जाए someday. I know it's a huge call, लेकिन I'm just calling it that way. UEFA has declared Barca. Yeah, हमने कल cover ही किया था ये. When I was on, I think was it on our stream when we were doing the transfer window review, or was it on Usman Bhai stream? Anyway, we did discuss that. Divanshu, आपको याद है तो Broja and Kai will be good fit against West Ham because they are physical. Kai should be more physical. He can be, but I really feel that maybe Mount, we need him, especially for the set pieces. I think we need Mount's delivery. ये मैं बोलता हूँ. Ziyech is not bad, but again, वही है. Ziyech, if you're not having Pulisic, doesn't make sense for me. Ramsdale must need to play because Ronaldo's record against him is pretty good. Okay, fair enough. लेकिन Ronaldo यार start करेंगे क्या? आयुष, क्या बोलते हो आप? क्या लग रहा है? Gut feel बोलिए. But anyway, people, is 3:45. So literally what 2.5 घंटों में हम live है. And remember to like the stream. We have basically covered the entire EPL. Correct me if I'm wrong. And we have covered many La Liga games. We have covered, of course, the big Milan derby, as well as a couple of Serie A games as well. Who am I to think about it? Honestly, मतलब दोनों are ex players. अब who is better from a perspective of basically managing the things? I don't know. Very honestly speaking, मैं पर्सनली नहीं जानता चौबे को. तो कल्याण चौबे आई थिंक प्रॉब्ली डिजर्व्ड इट. अगर इतने लोग ने वोट किया तो प्रॉब्ली डिजर्व्ड इट. और हाँ, थोड़ा सरप्राइजिंग था बाइचेंग भुटिया सर को खाली एक ही वोट मिला. वो थोड़ा सरप्राइजिंग था. लेकिन अगेन आई वुड एक्चुअली
be backing them either way. Yaar. Come on, let's be honest. Dono hi, Kalyan Chaubey was an ex-goalkeeper, if I remember right. Yeah, people. But Baichung Bhutia, obviously, yaar, all-time legend of India, I would say. Along with, by the way, I am very, very happy that I am Vijayan looks like he's part of it. But I am Vijayan also is a living legend of Indian sport generally. Chelsea have to win the match. Yeah, yaar, bilkul, man. We have to, it's a must win. Lekin, Gaurav, realistically, जाओ तो I've gone for a draw. Again, it's a draw derby. West Ham have looked better in recent weeks. Yeah, हमने cover किया था कल. Again, thanks Dimension. Thanks for joining. Again, if you're not subscribed to the channel, please subscribe. Hit that bell notification icon and do not forget to press the like button. Also, we have a second channel which is actually a main channel. वहाँ पर भी you'll get a lot of content. Almighty Blues FC. We are live at 6:15 with a pre-match for Chelsea. और हम साथ साथ में वॉच अलॉन्ग भी कर लेंगे second half when it comes to the Merseyside derby. What do you think? तो 6 बजे भाई 6 सवा 6 साढ़े 6 के बीच में हम विल बी लाइव ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. डू नॉट फॉरगेट दैट. एंड यस, मुझे लग रहा है अगर वो नहीं ला पाए एक ड्रॉ एटलीस्ट इन दिस गेम, मे बी जस्ट, लेकिन आई थिंक जस्ट आफ्टर ट्रांसफर विंडो आप दोगे नहीं, इसलिए मैं मे बी बोल रहा हूँ. लेट्स सी यार. लेकिन हाउ मेनी हैज ही टेकन गौरव? दैट्स द थिंग. कुकुरिया हैज बीन टेकिंग इट. आई थिंक माउंट को बैक करना चाहिए अभी भी इन टर्म्स ऑफ सेट पीसेस, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई थिंक उनका जो डिलीवरी है is probably better than most in the team. Simple as that. Reece James will be back, so probably he'll take. But I know that मैं चाहता हूँ personally Mount को लेना, because in the past, यार, especially his corners have been good in the past. This season not good, but still I would back Mount for set pieces at least. Okay. Okay. Any idea what the two teams are in Merseyside derby lineups? Daz Reynolds, first of all, thanks for joining. Again, if you have not subscribed, please consider subscribing. Like the stream. We have already discussed, so please, if you can just rewatch the stream from the beginning. We have covered all the injury news. We have talked about basically what are the possibilities in midfield for Liverpool, for Everton, who are the forwards that are available. Again, I would not see many changes in this game, to be very honest, because both the teams had got a result in the last game, technically speaking. So I don't see many changes, simply put. हाँ, मतलब आई थिंक कमेंट हंस रहे अभिषेक, लेकिन वही कमेंट था कि नेक्स्ट मैनेजर टू बी सैक्ड, फर्स्ट वाला नेक्स्ट. स्कॉट पाकर यार अभी तक शॉकिंग है. टेन हाग रोनाल्डो स्टार्ट नहीं दिया तो और इतना बड़ा मैच में टेन हाग नीड टू स्टार्ट रोनाल्डो इन माय ओपिनियन. वेल, ऑन द अदर हैंड आप 3 बैक टू बैक गेम्स जीते हो आफ्टर लॉन्ग व्हाइल, सो व्हाई नॉट कंटिन्यू विद द सेम थिंग. जस्ट सेइंग. Ronaldo, get him off the bench. That's what I would say. Not that I don't want him, but I'm just predicting that way, knowing Ten Hag for now. CVG first manager to sack the sins. Okay, second manager exactly. When Lampard loses, Fat Frank loser 200 million down the lane. When Gerrard loses, he's managing Aston, a very bad team. Give him time. Darren, you know me. You know my views. Everyone who constantly watch the channel. Nothing against Gerrard, but the fact is, yeah, he's overrated. Simple as that. He's overrated, and Lampard is not underrated, but I think he's been criticized way too much than what he should deserve. Because Everton squad, man, look at the squad. It still is getting something out of draws at least. Vardy is a better Premier League legacy than Drogba and Kane. Okay. Let's see. I don't know, man. 10 years is a long time in Leicester, but I would not agree with that. Come on, Kane and Drogba probably I would still go with. Vardy definitely has a shout for me. Will Fofana play? I doubt. Again, people who have missed the beginning part, almost 2 घंटे से बात करे भाई. Please check out. हमने बात किया है of every game. What are the possibilities? So please check it out. I doubt if he'll play. He'll come off the bench for sure. मिडफील्ड अगेंस्ट आर्सेनल, अगेन उस पर आएंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए वी हैव डिस्कस लिटरली 15 मैचेस डिस्कस किए भाई, और हम एफपीएल भी डिस्कस किए. ड्रॉगबा या okay, Gerrard should have stayed at Rangers and built a squad. You know what, Rangers fans were not happy, I know that as a fact, लेकिन come on, Premier League who would say no? Let's be honest about it. Lampard by Chelsea के लिए हाँ बोले थे, Gerrard would want to eventually manage Liverpool at some point, but हाँ अभी के लिए तो let's see what happens. Bye everyone, like, share, subscribe. Again भाई 6 सवा 6 साढ़े 6 के बीच में हम will be live on Almighty Blues FC for a pre-match, not just Chelsea but all the matches, क्योंकि 7:30 बजे there are 5 matches together, so we'll be discussing all. We are having a couple of panel as well hopefully, but definitely we'll get there absolutely. Chalo, much love and come on Chelsea, do it.